कितना महत्व है। और आज से बहुत हजारों साल पहले 625 ईस्वी में चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय, हम सभी ने इतिहास में ज़रूर पुलकेशिन द्वितीय का जो योगदान रहा था उनके बारे में हम सभी ने ज़रूर पढ़ा है। उनके द्वारा जब आंध्र देशम और आंध्र प्रदेश, जिसे हम आंध्र प्रदेश आज कहते हैं, आंध्र देशम पहले कहा जाता था, उसके वेंगी क्षेत्र पर उन्होंने जीत हासिल की थी। और उस जीत के उपलक्ष्य में माँ भद्रकाली का उन्होंने मंदिर बनवाया था। और काकतीय राजाओं ने बाद में इस मंदिर को अडॉप्ट कर लिया, इसको अपना लिया। और भद्रकाली माँ, जो देवी माँ हैं, भद्रकाली माँ, उसके बाद से उन्होंने उनको अपना कुल देवता मान लिया, कुल देवी मान लिया। और कुछ जानकार ये भी कहते हैं कि काकतीय राजाओं ने ही जो कोहिनूर हीरा है, दुर्लभ कोहिनूर हीरा, उसको भी माँ देवी की बाईं आंख में जड़वा दिया था। और ये भी हम जानते हैं कि दक्षिण भारत में, खासकर गोलकोंडा की बात की जाए, यहाँ पे हीरे की खान अभी भी है। तो आकर्षक कोहिनूर हीरा का जो कोल्लूर खान है वो भी यहीं से खनन किया गया था। तो आप ये बहुत ही ख़ास तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं वारंगल, तेलंगाना से। और दूरदर्शन समाचार, आपके अपने चैनल डीडी न्यूज़ की ये कोशिश रहती है कि जब भी इस तरह की कोई ख़ास तस्वीरें हमारे पास आती हैं हम आपको वो दिखाते हैं। और उसके पीछे जो इसका इतिहास है, जो इसका भूगोल है, इसके बारे में जो संपूर्ण जानकारी है, वो हम आपको पहुंचाने की लगातार कोशिश करते हैं, ताकि आपकी भी जो जनरल नॉलेज है, जो सामान्य ज्ञान है, उसमें बढ़ोतरी हो सके। और जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि ये मंदिर हज़ारों साल पुराना है, इसका इतिहास। चालुक्य वंश के राजा पुलकेशिन द्वितीय ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और लगातार हमारे सहयोगी अनुज यादव इस वक्त जुड़े हुए हैं, वो भी वारंगल में ही मौजूद हैं। अनुज, बहुत ही पुराना इतिहास इस मंदिर का। की प्रतिबद्धता, ऐसा ही व्यक्ति सोच सकता है, वो है हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक अभिनंदन से स्वागत करते हैं। గౌరవనీయులు మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి వర్యులు విచ్చేశారు। ఈరోజు ఈ ప్రాంగణంలో మన కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం మనం అదృష్టంగా భావించాలి। మరి అలాగే కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు सीधी तस्वीरें आप भोपाल से देख रहे हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम, और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कार्यक्रम में मौजूद हैं। कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करने के लिए ये मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी मंच पर मौजूद हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर कार्यकर्ता का अनावरण करें। Thank you, sir. Thank you very much. Can we have the AV, please? It is a firm belief of our visionary Prime Minister Shri Narendra Modi ji that for Vikasit Bharat, modern infrastructure is pivotal. Under his dynamic leadership, the country has seen an unprecedented transformation in infrastructure landscape of the country in the last 9 years. केंद्र सरकार के निरंतर प्रयास की वजह से आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई दोगुनी हो चुकी है। साल 2014 में जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2500 किलोमीटर के आसपास नेशनल हाईवे थे। आज तेलंगाना में नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर के 5000 किलोमीटर पहुंच गई। Telangana is a strong partner in nation building. Road infrastructure projects worth over rupees 34,000 crore have been completed or are in advanced stages of completion in Telangana. Today's Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi is laying the foundation stone for two national highway projects worth rupees 5,600 crore. Four-laning of Karimnagar Warangal section of NH 563 will ensure improved connectivity with Hyderabad Warangal Industrial Corridor, Kakatiya Mega Textile Park and SEZ at Warangal. Construction of four-lane access controlled greenfield highway from Mancherial to Warangal on NH 163G will improve connectivity to 21 economic nodes under PM Gati Shakti National Master Plan, thus benefiting several regions in Telangana. These projects will give a new energy to socio-economic development of Telangana and would be a significant step towards realizing Honorable Prime Minister's vision of Atma Nirbhar Bharat. Planning, time-bound execution and consolidated effort has been the hallmark of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji's Gati Shakti Master Plan, which has resulted in unprecedented infrastructure development and changed the economic landscape of the country. रेलवे बजट में लगभग 17 गुना की वृद्धि की गई। तेलंगाना में बीते 9 वर्षों में इससे नई रेल लाइन बिछाने का काम हो, रेल लाइनों की डबलिंग का काम हो या फिर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो, रिकॉर्ड तेजी से हुआ है। Today, our Honorable Prime Minister is laying the foundation stone for new railway manufacturing unit at Kazipet, costing over rupees 520 crore. Central government, under the leadership of our Honorable Prime Minister, has taken a decision to upgrade the POH wagon workshop to manufacturing unit at Kazipet. The new manufacturing unit will have state-of-the-art facilities to manufacture over 2,400 wagons. This unit will be spread over 160 acres and have facilities like shell assembly shop, body shop, wheel shop, bogie shop, CBC shop, sheet metal shop, paint shop, shower test and store ward among others. The unit has been designed to ensure faster turnover of the wagons in the shortest possible time.
The wagons manufactured in the state will now spur the growth momentum of Indian economy. Unit at Kazipet will spur an ecosystem of new industrial development by promoting ancillary industries, which in turn will generate employment and give boost to the socio-economic development of Telangana. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. భారతదేశాన్ని మహోన్నతంగా తీర్చిదిద్దాలనే సంకల్పం, సమస్త విశ్వాన్ని ఒక్క తాటిపై తీసుకురావాలనే వసుదైవ కుటుంబకం అనే నినాదం ప్రతిబింబిస్తూ నిస్వార్థమైన వ్యక్తిత్వం ఆయనకి పెట్టింది పేరు. మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి శ్రీ నరేంద్ర మోదీజీ భారతదేశాన్ని మహోన్నతంగా తీర్చిదిద్దేటందుకు మన ప్రియతమ ప్రధానమంత్రి గారి మార్గనిర్దేశం ఓ గొప్ప పరిణామానికి దారి తీస్తూ యావత్ ప్రపంచం దేశాలంతా భారత్ వైపు చూస్తూ ఒక స్నేహ సంబంధం ఏర్పరచుకోవాలని ఆకాంక్షిస్తున్నారు. అత్యున్నత ప్రజాస్వామ్య దేశంగా స్వావలంబన వైపు పరుగులు పెడుతూ ఆత్మనిర్భర్ భారత్గా అగ్రస్థానంలో ఉంది. ఇది సాధ్యపడటానికి కారణం సర్వోన్నతమైన నాయకత్వం, దూరదృష్టితో ఉన్న మన నేత, వరల్డ్స్ మోస్ట్ పాపులర్ లీడర్స్ మన ప్రియతమ ప్రధాని గౌరవనీయులు శ్రీ నరేంద్ర మోదీ గారు అమూల్య సందేశాన్ని ఇవ్వవలసిందిగా మనవి చేసుకుంటున్నాము. అభి హమ్ అనురోధ్ కర్తే హై हमारे प्रियति यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस पावन अवसर पर हमें संबोधित करें. तेलंगाना ప్రజలందరికీ నా అభినందనలు. तेलंगाना की गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी नितिन गडकरी जी, जी किशन रेड्डी जी, भाई संजय जी, अन्य महानुभाव और तेलंगाना के मेरे भाइयों और बहनों, हाल ही में तेलंगाना ने अपनी स्थापना के 9 वर्ष पूरे किए हैं. तेलंगाना राज्य भले ही नया हो, लेकिन भारत के इतिहास में तेलंगाना का कंट्रीब्यूशन, यहाँ के लोगों का योगदान हमेशा बहुत बड़ा रहा है. तेलुगु लोगों के सामर्थ्य ने हमेशा भारत के सामर्थ्य को बढ़ाया है. इसलिए आज जब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर बना है, तो उसमें भी तेलंगाना के लोगों की बड़ी भूमिका है. और ऐसे में आज जब पूरी दुनिया भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ रही है, विकसित भारत को लेकर इतना उत्साह है, तब तेलंगाना के सामने अवसर ही अवसर है. साथियों, आज का नया भारत युवा भारत है, बहुत सारी एनर्जी से भरा हुआ भारत है. 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है. हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है. देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए. इन्हीं संभावनाओं को बल देने के लिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास पर, यहाँ की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है. इसी कड़ी में आज तेलंगाना की कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है. इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं. साथियों, नए लक्ष्य हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं. भारत का तेज विकास
पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर संभव नहीं था। आने जाने में अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लॉजिस्टिक्स अगर महंगा होगा, तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। आज हर प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहले से कई गुना तेजी से काम हो रहा है। आज पूरे देश में हाईवे, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक जाल बिछा रहा है। 2 लेन के हाईवे 4 लेन में और 4 लेन के हाईवे 6 लेन में बदले जा रहे हैं। 9 साल पहले जहां तेलंगाना का नेशनल हाईवे नेटवर्क 2500 किलोमीटर का था, आज ये बढ़कर 5000 किलोमीटर हो चुका है। आज तेलंगाना में 2500 किलोमीटर की नेशनल हाईवे परियोजनाएं निर्माण के अलग अलग फेजेज में है। भारतमाला परियोजना के तहत जो दर्जनों कॉरिडोर्स देश में बन रहे हैं, उनमें से अनेक तेलंगाना से होकर के गुजरते हैं। हैदराबाद इंदौर इकोनॉमिक कॉरिडोर, सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद पणजी इकोनॉमिक कॉरिडोर, हैदराबाद विशाखापट्टनम इंटर कॉरिडोर, ऐसे कितने ही उदाहरण हमारे सामने हैं। एक प्रकार से तेलंगाना आस पड़ोस के इकोनॉमिक सेंटर्स को जोड़ रहा है, आर्थिक गतिविधियों का हब बन रहा है। साथियों, आज नागपुर विजयवाड़ा कॉरिडोर के मंचेरियल से वारंगल सेक्शन का भी शिलान्यास हुआ है। ये तेलंगाना को महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से आधुनिक कनेक्टिविटी देता है। इससे मंचेरियल और वारंगल के बीच की दूरी बहुत कम हो जाएगी और ट्रैफिक जाम की समस्या भी कमी आएगी। ये विशेष रूप से उन एरियाज से गुजरता है जहां विकास का अभाव था, जहां हमारे ट्राइबल कम्युनिटी के बहन भाई बड़ी संख्या में रहते हैं। ये कॉरिडोर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के विजन को भी मजबूती देगा। करीमनगर वारंगल सेक्शन के 4 लेन में बदलने से हैदराबाद वारंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क और वारंगल एसईजेड की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। साथियों, भारत सरकार आज तेलंगाना में जो कनेक्टिविटी बढ़ा रही है, उसका लाभ तेलंगाना की इंडस्ट्री को हो रहा है, यहाँ के टूरिज्म को हो रहा है। तेलंगाना में जो अनेक हेरिटेज सेंटर्स है, आस्था के स्थान है, वहाँ आना जाना अब और अधिक सुविधाजनक हो रहा है। यहाँ जो एग्रीकल्चर से जुड़े उद्योग हैं, करीमनगर की ग्रेनाइट इंडस्ट्री है, उसे भी भारत सरकार के इन प्रयासों से मदद मिल रही है। यानी किसान हो या फिर श्रमिक, स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल, सभी को इसका लाभ हो रहा है। इससे युवाओं को उनके घर के पास ही रोजगार के, स्वरोजगार के नए अवसर भी मिल रहे हैं। साथियों, युवाओं के लिए रोजगार का एक और बड़ा माध्यम देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बन रहा है। मेक इन इंडिया अभियान बन रहा है। हमने देश में मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए PLI योजना शुरू की है। यानी जो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसे भारत सरकार से विशेष मदद मिल रही है। इसके तहत 50 से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स यहां तेलंगाना में लगे हैं। आप जानते हैं कि भारत ने इस वर्ष डिफेंस एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 9 वर्ष पहले 1000 करोड़ से भी कम था। आज ये 16,000 करोड़ रुपए पार कर चुका है। इसका लाभ हैदराबाद स्थित भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को भी हो रहा है। साथियों, आज भारतीय रेल भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड, नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है। अब यहाँ हर महीने
दर्जनों वैगन बनेंगे। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यहाँ के हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ होगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है। विकास के इस मंत्र पर तेलंगाना को हमें आगे बढ़ाना है। एक बार फिर आप सभी को इस अनेक प्रगतिशील कार्यक्रमों के लिए, आयोजनों के लिए, विकास की नई धारा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। तो अभी आप ये सीधी तस्वीर देख रहे थे तेलंगाना के वारंगल से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना को 6,000 करोड़ से अधिक की सौगातें उन्होंने आज दी। और उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना को जो योगदान रहा है भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में, उसमें योगदान बहुत अहम रहा है तेलंगाना का। उन्होंने ये भी कहा कि बीते 9 वर्षों में विकास पर और कनेक्टिविटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और इसका कहीं ना कहीं Introducing Invicto, the League of Extraordinary. कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सांसद हूँ, पर सरकार देश की है। सबके काम जो होने लायक होते हैं सबके करता हूँ। मैंने काम में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। आज हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे अत्याधुनिक मशीनरी हमारे देश में है और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी रोड की क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में कहीं कम नहीं है। हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अभी और आपको आश्चर्य होगा हमने 5,000 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट पर बचाए। आजकल लोग मेरे पास इस बात के लिए नहीं आते कि मेरी ज़मीन मत लो हाईवे में, लोग इसलिए आते कि मेरी छोटी ज़मीन बाकी ये भी ले लो। तो आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं। पर मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। आरएसएस किसी को पोलराइज नहीं करता। उपासना पद्धति अलग है पर मेजॉरिटी हम हिंदू हैं। मेरा कन्विक्शन, मेरी पार्टी, उसको भले भविष्य अच्छा हो या ना हो, पर आई एम विथ माई कन्विक्शन, मैं इसी में रहूँगा। पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। और ये भी मैंने कहा था कि अगर ऐसा परिस्थिति रहेगी, हार होती रहेगी तो चलेगा, मैं वक्त आया तो कुएं में कूद जाऊंगा पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें हम 100% जीतेंगे और तेलंगाना में हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी। और 2024 100% जीतेंगे। सही बताओ तो दिल्ली में सब घर पर आलू पराठा और पनीर यही ज़्यादा कॉमन होता है। हाँ। मुंबई जैसा फूड कहीं नहीं मिलता। Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. My guest today is a person many of you have been requesting for me to feature in this podcast, Nitin Gadkari. Nitin Gadkari is a minister in the Modi cabinet and has been called a super achiever and one of the best performers in the Modi cabinet by many newspapers and television channels. Nitin Gadkari, as Minister of Road Transport and Highways, has taken several initiatives which have improved infrastructure and connectivity in India. He's known for his proactive approach to governance and action-oriented work ethics. Always a delight to speak to for any journalist, Minister Nitin Gadkari on the podcast. नितिन जी, धन्यवाद आप हमारे पॉडकास्ट में आए। मैंने इंट्रोडक्शन में यही कहा कि जब से मैंने स्टार्ट किया है ना पॉडकास्ट, तब से वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पीपल ना कि इनको बुलाइए, उनमें आपका नाम सबसे ऊंचा होता है। तो एवरीबडी वांट्स टू नो, क्योंकि आप हर चीज़ बोल जाते हैं, आप कुछ सरप्राइजिंग कह जाते हैं, आप कुछ मस्ती वाली बातें कर देते हैं, सीरियस डेटा होता है आप। तो जो भी सुन रहा होता है, चाहे जर्नलिस्ट हो चाहे लेमैन हो, सबको कुछ ना कुछ मिल जाता है आपके इंटरव्यू को सुन के। सो थैंक यू वेरी मच पॉडकास्ट में। थैंक यू। तो पहले तो मैं बताऊं कि एक आपका स्टेटमेंट था जो मैं जब भी मैं वो देखती हूँ ना, आई बर्स्ट आउट लाफिंग। जब आपने कहा ना, आईड रादर जंप इनटू अ वेल देन जॉइन द कांग्रेस पार्टी, ये आपने कहा था, कई बारी आपने कहा है, पर जब भी मैं पढ़ती हूँ आई फील लाइक लाफिंग।
आई थिंक फर्स्ट टाइम वो श्रीकांत जी ने कहा था ना कि राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। ऐसा उन्होंने कहा था, तो मैंने उनको नम्रतापूर्वक कहा था कि मेरा कन्विक्शन, मेरी पार्टी, उसको भले भविष्य अच्छा हो या ना हो, पर आई एम विथ माई कन्विक्शन, मैं इसी में रहूँगा। पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है, कितने भी चुनाव हारे या जीते। और ये भी मैंने कहा था कि अगर ऐसा परिस्थिति रहेगी, हार होती रहेगी तो चलेगा, मैं वक्त आया तो कुएं में कूद जाऊंगा, पर कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। और वो बार बार आता है, अभी भी रिसेंटली फिर से आया, वही बात उठी थी जब कांग्रेस कह रहे थे कि क्योंकि आपके संबंध इतने अच्छे हैं ना। एक बात जरूर है कि मेरे संबंध सभी पार्टियों के अच्छे हैं। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे डिपार्टमेंट पर जब चर्चा हो रही थी तो उस दिन मैंने हमारे राज्य मंत्री जी को कहा था कि आप इसका जवाब दो, पर मुझे बाद में हमारे स्पीकर साहब का फ़ोन है, बिरला जी का, कि यहाँ सब लोग आपके बारे में इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, और आप सभागृह में नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो नागपुर में हूँ। बोले आप ज़रूर आइए। फिर मैं तुरंत आया। 75 लोग अक्रॉस द पार्टी, सब लोगों ने, ऑल पार्टी के लोगों ने, हर व्यक्ति ने मुझे धन्यवाद दिया और मेरा अभिनंदन किया। तो बाद में स्पीकर साहब ने कहा कि ये पार्लियामेंट के इतिहास का ऐसा पहला उदाहरण है कि एक मंत्री की तारीफ ऑल सेक्शंस और सभी पार्टियों ने की। तो मैंने कहा मेरा आइडियोलॉजी पक्की है, मैं आरएसएस का स्वयंसेवक हूँ, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ। ये सब होने के बाद भी लोगों ने मुझे एक प्रकार से इतना अप्रिशिएट किया, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हुई। पर इसका सबसे बड़ा कारण है कि मैं ये सोचता हूँ कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का सांसद हूँ, पर सरकार देश की है। और इसलिए मोदी जी ने भी कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। तो मैंने कहा मैं सबके काम जो होने लायक होते हैं सबके करता हूँ। मैंने काम में कभी पॉलिटिक्स नहीं किया, और यही बात बीजेपी ने हमें सिखाई गई है, और यही कि सबके साथ न्याय करना चाहिए, यही बात हमको मजबूती देती है। तो जब आप व्हेन यू मेक द रोड, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वो बीजेपी में हो, बीजेपी वाले राज्य में हो, वो किसी भी राज्य में जा सकता है, क्योंकि वो एक सेंट्रल प्लान है। देखिए, आपको 9 साल में मंत्री हूँ जी, मैं आपको बिल्कुल वचनपूर्वक बताना चाहता हूँ कि मैंने कभी पॉलिटिकल विचार नहीं किया। इस देश के राष्ट्रीय महामार्ग देश की एसेट है, और यहाँ से चलने वाली भारत की जनता हमारा परिवार है। उनको अच्छे रोड मिलने चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मिलनी चाहिए, और ये हमारा कर्तव्य है, और यही हमारे पॉलिटिक्स का उद्देश्य है। अब मैं एक इंटरव्यू देख रही थी अमेरिकी पत्रकार का, वो वैसे मुंबई के ही हैं, फरीद ज़कारिया, और वो कह रहे थे कि जैसे पहले होता था ना कि आप शंघाई में चले जाओ, होटल में आप कमरे खिड़की से बाहर देखो तो क्रेन ही क्रेन होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, और फिर आप मुंबई आते हो तो कहीं एक क्रेन दिखाई दिया, बेंगलोर चले गए कहीं 2 क्रेन दिखाई दिया, लेकिन अब ऐसे होता है कि चारों ओर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है। हाँ, इससे दिक्कत ज़रूर होती है लोगों को कि ट्रैफिक जैम हो जाते हैं शहर के बीचों बीच, लेकिन एक वाइब्रेंसी आ जाती है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है और सड़कें बन रही है, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, एक देयर अ एनर्जी, एक ऊर्जा आ जाती है उसमें। ये एक विदेशी पत्रकार ने, मतलब मूल तो उसका भारतीय है, लेकिन विदेशी पत्रकार ने भी ये नोटिस किया है। नहीं, एक बात देखो, मैं आपको बताता हूँ ये कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है। मैं 95 में मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था। वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, 55 उड्डान पुल, ये मुझे बनाने का मौका मिला। तब मैंने एक निर्णय किया था कि जिसको भी फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा उसको मशीन लेने के लिए हम 10% एडवांस देंगे, और वो मशीन अगर इंपोर्ट करता है तो हम ड्यूटी जो होती है कस्टम ड्यूटी हम भरेंगे, जिसके कारण हमारे यहाँ क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू अपग्रेडेशन हो। मुझे इस बात की खुशी है कि एक सिंप्लेक्स करके एक कंपनी थी, उसने पहली पाइलिंग मशीन लाई, और उसका पुल बन रहा था अपना बांद्रा में, ये जो माइन का फ्लाईओवर है, अच्छा, वो जो बड़ा फ्लाईओवर है ना, जो टर्न होता है, तो उसका पहले मशीन का मैंने उद्घाटन किया। फिर रेडीमिक्स कंक्रीट मिक्सचर आए। उस समय हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी प्रगत नहीं थी, पर उसके कारण इतने बड़े प्रमाण पर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ और धीरे धीरे चेंज हुआ कि आज हमारे देश में वर्ल्ड की सबसे अत्याधुनिक मशीनरी हमारे देश में है। और मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी रोड की क्वालिटी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में कहीं कम नहीं है। हमने 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए अभी। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड डेटा तो सब आपके पास है, तो आप सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ही बता दीजिए कौन कौन से रिकॉर्ड कैसे तोड़े आपने। जितने लेन हमने बनाई जी, वो 100 किलोमीटर की हुई, वो 24 घंटे में बनाई। जी,
जो अभी अलीगढ़ से लेकर जो रोड बना, हाँ। 100 किलोमीटर की 100 टोटल दिन। लेन पकड़ के वो 100 किलोमीटर होता है। मतलब थोड़ा सा नंबर्स में गलती होगी, क्योंकि हमको, सर मैं सरकास्टिकली कह रही हूँ, 25-25 साल वेट करना पड़ता है 100 किलोमीटर के लिए। नहीं, एक लेन को 1 किलोमीटर मानकर जो 6 किलोमीटर बनी, तो उसका काउंट करते हुए वो 100 किलोमीटर का बना। फिर मुंबई वडोदरा में 2 रिकॉर्ड वर्ल्ड के हुए, फिर सोलापुर बीजापुर में वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए। एक प्रकार से हमारे 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड हुए हैं, और इसलिए हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमने नई नई टेक्नोलॉजी लाई है और बहुत अच्छा काम किया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, हम लोग ये आसाम में अपने ब्रह्मपुत्रा पर, ये जो सोनवाल जी की कॉन्स्टिट्यूंसी है, माजुली आइलैंड, वहाँ ब्रिज बना रहे हैं। वो मैंने उनके चुनाव में क्या घोषणा की थी। जब मैं वापस आया तो 6000 करोड़ का ब्रिज था। हमने टेक्नोलॉजी बदली, नहीं, हमने मलेशिया से टेक्नोलॉजी वो स्वीकार की, अब हमारा ब्रिज 680 करोड़ में बन रहा है। जोजिला टनल 4 बार टेंडर हुई, 12,000 रुपये उसके एस्टिमेटेड कॉस्ट थी। हमने मेहनत की, नई टेक्नोलॉजी आई, काफ़ी लोगों को प्रोत्साहित किया, टेक्निकल फाइनेंशियल नॉर्म बदले, अब करीब 60-70% टनल पूरी हुई है। और आपको आश्चर्य होगा, हमने 5,000 करोड़ रुपए एक प्रोजेक्ट पर बचाए। तो टेक्नोलॉजी भी लाई, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं किया, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को कम करने की कोशिश की, और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन हर समय इम्प्रूव करने की कोशिश की। अब पूर्वी भारत के बारे में बात करें, दिसंबर 2022 में आपने अनाउंस किया था 3 लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर एरियाज। अब सब जानते हैं कि स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से वहाँ पे जो रोड नेटवर्क है वो पहले ही बन जाना चाहिए था, नहीं बना, उसकी वजह से हमें बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़े नॉर्थ ईस्ट में। तो ये जो वॉर फुटिंग पे जो वहाँ पर आप बना रहे हैं, सड़कें बना रहे हैं, बॉर्डर रोड्स बना रहे हैं, ये इसमें अर्जेंसी क्या चाइना की जो अग्रेसिव पॉलिसी है उसकी वजह से भी है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब बने तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी दी, और हमने उसके लिए NHIDCL, नेशनल हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी खोली, और जो पहाड़ी क्षेत्र पर जो पूरा काम था उनको दिया। और अभी तक हम जो है करीब 1,10,000 करोड़ के काम पूरे कर सके। करीब 1 लाख करोड़ के काम प्रोसेस में है, और 1 लाख करोड़ के काम होंगे। मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं। आप जो 7 सिस्टर्स है, 7 स्टेट्स है, किसी भी स्टेट के किसी भी अपोजिशन पार्टी से लेकर किसी को सवाल पूछो रोड के बारे में क्या हुआ, आपको जवाब मिल जाएगा। 7 sisters, for those of our viewers who live outside of India who don't know the 7 sisters, now we have 8, are the northeast region, the states of northeast India, and the 8th one, Sikkim, was joined in this to make it the 8 sisters now. जी सर, सॉरी, ये just for those अभी who don't know. इसमें सब जगह पर इतने अच्छे टनेल्स, रोड, ब्रिजेस, ब्रह्मपुत्रा पर तो हम कम से कम 7 ब्रिजेस बना रहे हैं, कुछ बन गए, यानी ब्रह्मपुत्रा ने डिवाइड किया है। तो नेचुरली आज वहाँ इतना अच्छा काम हुआ है। जोगीघोपा में हम मल्टी मॉडल हब बना रहे हैं कि जहाँ रोड भी होगा, रेलवे भी होगी, हवाई जहाज भी होगा और वाटरवेज भी होगा। तो एक प्रकार से बहुत बड़े प्रमाण पर नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो वो हाईवे से लेके कनेक्टिविटी, मैं एक बात लोगों को अक्सर बताता हूँ और मैंने अपने जीवन में ध्यान में रखी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होगा तो इंडस्ट्री आएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी। जहाँ इंडस्ट्री, कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगी वहाँ रोजगार तैयार होगा, और जहाँ रोजगार तैयार होगा वहाँ गरीबी दूर होगी। तो हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ये हमारे विकास का सबसे अहम मुद्दा है, और ये अंत्योदय से भी जुड़ा हुआ है निश्चित रूप से। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर, ट्राइबल सेक्टर, जहाँ लोग एक प्रकार से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दूसरे पिछड़े हुए हैं, वहाँ रोजगार निर्माण करना, वहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, वहाँ के लोगों को मुख्य प्रवाह में, विकास के प्रवाह में लेके आना, ये हमारा पहला कर्तव्य है। इसीलिए 120 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट्स और 500 ब्लॉक्स जो विशेष रूप से बैकवर्ड है सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, उसके ऊपर हमने विशेष ध्यान दिया है। जी, ये जो आपका जो 10 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स है, इसका क्यूमुलेटिव वैल्यू 8,000 करोड़ कुछ है। तो आपको जब ये सब आप रोड्स बना रहे हैं तो फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं थी? हमेशा फंड्स करके कोई चीज़ नहीं होता है। मैं आपको सुधारता हूँ, भारतमाला 1 की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ,
उसकी 8,000 नहीं 8 लाख करोड़ 8 लाख करोड़ ओके। और दूसरी बात, हाँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा पैसा बजट बहुत अच्छा दिया है वित्त मंत्री जी ने, पर उसके साथ साथ हम रोड को मोनेटाइज करते हैं। हम 4 प्रकार के रोड बनाते हैं। एक ईपीसी, जिसमें हम कॉन्ट्रैक्ट दे के रोड बनाते हैं और पूरा होने के बाद फिर उसको मोनेटाइज करते हैं 15 साल के लिए। दूसरा है बीओटी, जो हम रोड देते हैं वो डायरेक्ट पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में पार्टी बनाती है, उसको टोल के लिए 10 साल 12 साल 15 साल उसके हिसाब से टेंडर के हिसाब से समय देते हैं। तीसरा है हाइब्रिड एनुटी, यानी उसमें 40% हम देते हैं, 60% वो लाते हैं। और चौथा है टीओटी और इनविट, पाँचवा। टीओटी और इनविट ने क्या है कि हम रोड बनाकर फिर उसको बेच देते हैं। हमारा जो इनविट मॉडल है उसमें अभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में हमने उसको लॉन्च किया और 10 दिन का टाइम था और पहले दिन हमारा बॉन्ड इशू 7 घंटे में 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। मैं गोवा में था, कार्यक्रम छोड़कर आया और वो बेल बजाकर मैंने उसको क्लोज़ किया। इतना पब्लिक का रिस्पांस मिला। हम छोटे छोटे लोगों को मैंने आह्वान किया था कि हम आपको 8.05% ब्याज देंगे साल भर और हर महीने में आपके अकाउंट में इंटरेस्ट जमा करेंगे। अब बैंक में तो 5.5 के ऊपर मिलता नहीं, तो नेचुरल लोगों ने पैसा दिया और इतना पैसा मिला कि मुझे नहीं लगता हमारे पास रोड कंस्ट्रक्शन के लिए कोई पैसे की कमी है। सर आई थिंक 8,000 करोड़ वाज जस्ट द 10 हाईवेज, उसके बाद वो फीडर रूट्स है वो सब जुड़ के आता है ना। हमने भारतमाला 1 ओके, ये हमारा बड़ा प्रोजेक्ट था। हाँ। जो टोटल 34,000 किलोमीटर का था। उसमें 32 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे थे, एक्सिस कंट्रोल ग्रीन है। हम नई अलाइनमेंट तैयार की, पुराने रोड नहीं। हाँ। तो आप जैसे दिल्ली मुंबई है, पुराना रोड नहीं है, नया बना है। ऐसे ग्रीन अलाइनमेंट के किए, काफ़ी बड़े उसमें कामों की बड़ी लिस्ट है, मैं आपको दे के जाऊँगा। तो भारतमाला 1, अब भारतमाला 2 के लिए हम लोग वर्क कर रहे हैं। सर मैं रोड सेफ्टी के ऊपर आती हूँ। पहली बात तो हमारे यहाँ वो सिस्टम ही नहीं होता था कि इतने चौड़े रोड्स बनेंगे। एक टाइम जोन होता है ना कि लोग सीख जाते हैं कि कैसे हाईवेज में रिवर्स नहीं करना, लाइट डिप नहीं करना, फुल वो नहीं ब्लेयर में लाइट्स नहीं लगाना, लेन में चलाना, ये सब हम लोगों ने सीखा नहीं है हमारे देश में। धीरे धीरे आता है कुछ मुल्कों में, हमारे कंट्री में झट से आ गया जैसे ही आप मंत्री बने, तो इट हैज़ कम इमीडिएटली। अब इसके साथ साथ जो बाकी जो फीडर रूट्स बन गए हैं वो दे मे नॉट बी 16 लेन 12 लेन, पर वहाँ पे एक्सीडेंट्स, रोड एक्सीडेंट्स हमारे यहाँ इतने हैं, पॉट होल्स होते हैं। आप कहते हैं कि इतने अच्छे रोड्स बन गए, लेकिन जब वो पॉट होल डेथ्स होते हैं तो वो इट इज़ अ वेरी शॉकिंग थिंग। फिर उसके बाद देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि एक बात बिल्कुल सही है कि हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, करीब 1.5 लाख मौतें होती है और मरने वाले लोगों में 18 से 34 वयोगट के 60% युवा है और इस देश का 3% जीडीपी खत्म होता है, खराब होता है इसमें। और जो 2.5-3 लाख लोग जो है उनके भी हाथ पैर टूट जाते, बेचारे काम नहीं कर सकते। एक बात मैं नम्रतापूर्वक स्वीकार करता हूँ कि पिछले 9 साल में बहुत कोशिश करने के बाद में भी इसमें कमी नहीं आई, ज़्यादा कमी नहीं आई। इसके लिए 5 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, 6 एयर बैग्स टेक्नोलॉजी अच्छी बनाए, तो वो हम लगातार प्रयास कर रहे, सुधार रहे हैं। दूसरी बात रोड इंजीनियरिंग, रोड इंजीनियरिंग में काफ़ी गलतियाँ हैं। कई अंडरपास बनाया नहीं, सिग्नल बराबर नहीं, मार्केट साइनेज लगाया नहीं, तो कुछ कमियां हैं, हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वो मतलब वो साइरस मिस्त्री उनका डेथ हुआ था, उससे पहले श्रीकांत जी जिसके बारे में हमने जिक्र किया, उनका भी रोड, सो मेनी पीपल, पायलट राजेश पायलट, इन सब का रोड एक्सीडेंट होता है एंड करियर्स तबाह हो जाते हैं। 10% ऑफ द वर्ल्ड्स रोड एक्सीडेंट्स आर फ्रॉम इंडिया, और आपने खुद गिनाया कि कितने होते हैं। 10%, वी आर हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, पर ये लोगों के सहयोग के बिना, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। मतलब 10% ऑफ ऑल रोड एक्सीडेंट्स हैपन इन इंडिया, तो मतलब पर ईयर आई थिंक लाइक आपने कहा कि 150,000 160,000 पीपल डाइंग, सो इट्स नॉट अ गुड स्टेटिस्टिक। और आपने कहा कि जैसे 6 एयर बैग्स, तो क्या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स मान रहे हैं इस बात को, क्योंकि कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है गाड़ी का? देखिए, लोगों की जान की कीमत पैसे से बहुत ज़्यादा है। हाँ, वो तो मानती हूँ। हाँ, और इसलिए इकोनॉमिक मॉडल में भी हम वो ला रहे हैं, अब स्टार रेटिंग ला रहे हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि कौन सी गाड़ी कितनी सुरक्षित है। और निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ
कि हमको रोड एक्सीडेंट्स कम करने के लिए हमने करीब 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट पर खर्चा कर रहे हैं। जो एक्सीडेंटल स्पॉट है उसको सुधार रहे हैं। हम ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में सुधार कर रहे हैं। रोड सेफ्टी काउंसिल हमने बनाई है। अलग अलग अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार से बड़े बड़े लोगों का सहयोग के लिए कार्यक्रम करते हैं, लोगों को जगाने का। ट्रैफिक सिग्नल्स हमने इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम लाई है और लोगों से अनुरोध किया है कि हेलमेट पहनो। ड्राइविंग लाइसेंस की पद्धति बदल दी हमने। पर ये स्टेट गवर्नमेंट्स करते नहीं है ना सर। कितने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट्स हैं जहाँ पर हेलमेट लोग पहनते ही नहीं है। पहनते भी है पर कुछ लोग नहीं पहनते। और सब लोग मतलब जैसे मैं अभी पंजाब में थी, कोई भी नहीं पहन रहा था। देखिए, आपको सबसे पहली बात बताता हूँ, अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे तो हम एक्सीडेंट कम नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन बिहेवियर रिगार्डिंग रोड सेफ्टी ये सबसे बड़ी समस्या है। कानून के प्रति कानून का पालन करना और कानून का सम्मान करना, कभी कभी ये स्थिति ऐसी बचती है कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। हमने नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, फाइन्स ज़्यादा किए। ये फाइन ज़्यादा करना ये हमारी इच्छा नहीं है। हम लोगों को इसमें से जो जाने जा रही है वो बचाना चाहते हैं। हम लोगों की रक्षा करना चाहते हैं और इसीलिए कोशिश कर रहे हैं। सीट बेल्ट का आपको याद है, लोग सीट बेल्ट पहनते ही नहीं थे और उसके बाद मतलब सीट बेल्ट, हाँ जब पुलिस पकड़ेगी तब देख लेंगे, और जब फाइन बढ़ गया और पुलिस पकड़ने लग गई तब सीट बेल्ट पहनने लग गए लोग। तो वही होगा हेलमेट का भी, जब तक आप फाइन नहीं बढ़ाएंगे, जब तक फाइन बढ़ाया अभी, इससे ज़्यादा बढ़ाना उचित नहीं है। धीरे धीरे बड़े प्रमाण पर लोग अब इसको पालन कर रहे हैं। इसका रेशो अब बढ़ा है और मैं आपके मार्फत लोगों को आह्वान करूंगा कि उनकी जान की सुरक्षा करने के लिए वो इसको पहने। जो सिग्नल से उसका पालन करें, लेन डिसिप्लिन का पालन करें, स्पीड कंट्रोल में रखें और निश्चित रूप से हम अपनी जान को बचाएं। आखिर उनकी जान है तो जीवन है। तो मुझे लगता है अपनी जान को बिल्कुल समझते उन्होंने बचाना हर व्यक्ति का कर्तव्य। इसमें सेलिब्रिटीज आप कह रहे हैं, अमिताभ बच्चन वगैरह सारे इन्वॉल्व हैं। आप अगर बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अगर आप उनसे बोलें इनको ज्वाइन करने के लिए फॉर रोड सेफ्टी, तो वो क्या करेंगे? नहीं, सब लोग मदद करने के लिए। क्रिकेटर्स तैयार है, फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस तैयार है। काफ़ी लोगों ने हमको इसमें सहयोग दिया। मैंने आपको ट्वीट भी किया था कई साल पहले, जब मैंने कहा था गडकरी जी एक दिन हमारे ऑफिस आएंगे, मैं ये RTR फ्लाईओवर ज़रूर बताऊंगी जिसको 20-25 साल लग गए इस फ्लाईओवर को बनने के लिए। दिल्ली का डी कंजेशन, ये आई नो इट्स अ नेशनल प्रोग्राम, इंटरनेशनल प्रोग्राम, लेकिन दिल्ली का डी कंजेशन कब होगा? ये आश्रम फ्लाईओवर, RTR फ्लाईओवर, इतने मगर गिनने लग जाऊं ना सर, मुसीबत है इस शहर में। आप जरूर गिनी है, पर पहली बात आपको नम्रतापूर्वक बताना चाहता हूँ, ये आपका नहीं है। आप जितने बोल रहे हो उसमें एक भी मेरा नहीं है। अब मैं मेरे प्रोजेक्ट आपको बताता हूँ। द्वारका एक्सप्रेसवे 30 किलोमीटर 10,000 करोड़ दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। करीब 80% काम पूरा हुआ। I miss gravity. न्यूटन के सिर पे एप्पल ना गिरा होता ना तो बिना केचप का बर्गर नहीं खा रहे होते। That's not how gravity was discovered by Newton. All in. ब्लफ कर रहा था। सब नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर या साइड में क्यों नहीं? Gravity. That's how poker helped in the discovery of gravity. All in. Earth, your turn. Now what are you waiting for? Join the revolution. फिर 6 लेन UR2 जो पानीपत से आते हुए एयरपोर्ट आना 2 घंटा लगता है, अब 20 मिनट में आओगे। तो वो जो प्रोजेक्ट है UR2 8,000 करोड़ का अक्टूबर 2023 तक पूरा होगा। DND इंटरचेंज कालिंदी खुंज अलॉन्ग विथ यमुना फरीदाबाद बल्लभगढ़ सोना 60 किलोमीटर 7,000 करोड़ दिसंबर 2024 में पूरा होगा। 6 लेन ऑफ दिल्ली अक्षरधाम टू इंटरसेक्शन ऑफ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 32 किलोमीटर 3,500 करोड़, ये 2024 दिसंबर तक पूरा होगा। दिल्ली टू पानीपत 70 किलोमीटर 2,205 करोड़ का, ये अप्रैल 2023 में पूरा हो गया, 97% हो गया। 4 लेन ऑफ गोहना टू सोनीपत 39 किलोमीटर 2,000 करोड़, सितंबर 2023 73% पूरा हुआ। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी बिटवीन दिल्ली टू जयपुर,
ये 225 किलोमीटर 1300 करोड़ का अगस्त 2023 तक पूरा करने की हम कोशिश करेंगे। अपकमिंग में काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे पास लंबी लिस्ट है, मैं आपको दे के जाता हूँ। ये टोटल 63,212 करोड़ के काम मैं कर रहा हूँ और इसमें से करीब 50,000 करोड़ के काम लगभग पूरे होते आए हैं। इसमें आपने बहुत सारे ऐसे गिने जो 2024 में होंगे, 2024 दिसंबर, बीच में तो चुनाव आ जाएंगे सर। नहीं, कोई फर्क। अभी ये जो 65,000 करोड़ की लिस्ट है, इसमें से लगभग एक काम शुरू होने का है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टू जेवर एयरपोर्ट, ये शुरू होने का है। बाकी सब काम 100% पूरे हुए। एलिवेटेड यू टर्न नियर एम्बुलेंस महल, 8 लेन कॉरिडोर फ्रॉम धौला कुआ टू एयरपोर्ट, फ्लाईओवर एंड अंडरपास ऑन दिल्ली गुड़गांव, 4 लेन यूपी हरियाणा बॉर्डर टू ये तो नहीं बने अभी तक। सब बन गए सब, ये 100% है। ये देखो अंडरपास इसमें से एक भी नहीं होगा तो ब्रेकिंग न्यूज लगा देना। ये नहीं, पर वो जो एयरपोर्ट टू गुड़गांव है अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। वो फ्लाईओवर बने ना फ्लाईओवर, सर, हाँ, वो जो अभी बन रहे हीरो वाला बन गया, अभी आप जाके आइए, अभी वहाँ बाकी नहीं कोई। जानती हूँ ना, मेरा मैका वहीं पे है। तो वही सब कह रहे थे, 1-2 बारी गडकरी जी अटक जाएंगे ना ट्रैफिक जैम में, तब पता लगेगा। आपको सच बताऊं, एक बार नहीं, मैं 10 बार अटका हूँ। उस और ये रोड का महत्व मैं जानता हूँ, आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए कोशिश है, अब जो द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनेगा और इससे करीब इसका 30-40% ट्रैफिक धौला कुआं टू गुड़गांव वाला कम हो जाएगा। सर बहुत बहुत दिक्कतें हैं ना, मैं 1-2 गिनूँ आपको। एम्बुलेंसेस फंस जाती हैं, अब देर आर सो मेनी डायबिटिक्स, जैसे माय मदर ऑल्सो, मतलब साथ में इंसुलिन लेके चलना पड़ता है क्योंकि कुछ पता नहीं है, अगर हो जाएगा तो सो यू हैव टू कैरी योर इंजेक्शन विद यू, क्योंकि 1.5 घंटा 2 घंटा लग सकता है, 3 घंटे लग सकते हैं कभी कभी ट्रैफिक में। एक आध साल रुकिए, आपको 50% रिलीफ मिल जाएगा। स्कूल बसेस अटक जाती हैं, अभी नहीं अटकेगा, समय कम हो जाएगा। ओके। आप देखिए, दिल्ली से मेरठ 4.5 घंटे लगते थे, हाँ, अब 45 मिनट हो गया। दिसंबर तक दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा, हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में होगा, कटरा 6 घंटे में होगा, जयपुर 2-2.25 घंटे में होगा, चंडीगढ़ 2.5 घंटे में होगा। लिख लो दिसंबर। दिल्ली शिमला गई थी मैं सर, और दिल्ली जयपुर भी किया, दैट इज फैब्युलस। अभी दिल्ली चंडीगढ़ से हम लोग मनाली रोड बना रहे हैं, हाँ, उसमें 9 घंटे लगते थे, अब दिसंबर के बाद वो 3 घंटे में होगा। पर पता है क्या होता है सर, ये जो हिली एरियाज में जो रोड्स बने, ड्यूअल कैरेज वे बन गया सारा, पर क्या होता है, कालका से ऊपर जब जाते हैं ड्यूअल कैरेज वे तो बन गया, पर ज़रा सी बारिश आ जाती है तो वो पत्थर सारा नीचे ही आ जाता है, फिर वो सिंगल बन जाता है, पर लोग तो नहीं जानते ना कि वो सिंगल हो गया। चिंता मत करिए, हम सब टनल बना रहे हैं, 2 लाख करोड़ की टनल बना रहे हैं हम देश में। केवल जम्मू से श्रीनगर 18 टनल बना रहे, 14 बन गई। ये जो मनाली की बात कर रहा हूँ, ये पूरी टनल बनी है। जोजिला कारगिल के नीचे आशिया की सबसे बड़ी 11.2 किलोमीटर टनल बना रहे, जिसमें 5,000 करोड़ हमने बचा है। झेड़मोर टनल पूरी हो गई, और वहाँ से लद्दाख लेह से मनाली तक हम लोग और 4 टनल बना रहे हैं। उसमें अटल टनल जो मनाली में बनी है, 3.5 घंटे रोहतांग पास जाना को लगता था, अब 8 मिनट में टनल होती है। सर इसमें टेक्नोलॉजी, जो आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का बड़ा इस्तेमाल होता है, आपने जिक्र किया जो आपका जो पायलट प्रोजेक्ट था पुणे वाला, वो वाला, तो वहाँ से लेके यहाँ तक आने में टेक्नोलॉजी को आपने कैसे इंटीग्रेट किया इसमें सारा? देखो, हमने टेक्नोलॉजी में नहीं लिया और हम इको फ्रेंडली अप्रोच है। अभी लोहे का क्रैश बैरियर बनता था, हमने बाम्बू का बनाया, अप्रूव कर दिया। हम अभी बिटुमेन में करीब 7% प्लास्टिक डालते हैं, वेस्ट प्लास्टिक, 15% रबर जो टायर यूज़ होते हैं ख़राब हो जाते हैं, उसके पाउडर डालते हैं। अभी हम परली से बिटुमेन बना रहे हैं। वो लॉन्ग लास्टिंग है? हाँ बिल्कुल, सब प्रूवन है। अभी दिल्ली के ये UR2 में हमने दिल्ली का 25 लाख टन कचरा, जो 3 माउंटेन है कचरे के, वो 10-10 किलोमीटर कम हुए, हमने कचरा डाला। अहमदाबाद डोलेरो में 30 लाख टन कचरा। फिर से बताइए कचरा कैसे किया? दिल्ली में गाजीपुर है, टेकरी है। हाँ जी। तो हमने ये UR2 जो बनाया, तो हमने जो एग्रीगेट यूज़ करने के बजाय कचरे को सेग्रीगेट किया। ओके। और वो कचरा 30 लाख टन कचरा डाला रोड में। हमने अहमदाबाद डोलेरो हाईवे में करीब 30 लाख टन कचरा डाला रोड के अंदर में। अब हम कचरे की पॉलिसी बना रहे हैं कि कचरे को हम रोड में यूज़ करेंगे। ओके। और वो चलेगा? 100% चलेगा, क्योंकि इतने सारे, देखिए आप एक बात याद रखना, हम कोई काम क्वालिटी के बिना नहीं करेंगे। साइंटिफिकली प्रूव 100%, सब बातों को प्रूव होने के बाद ही करेंगे।
ओके और ये कहीं इंटरनेशनली हुआ है कि हम ये कचरे को सेग्रीगेट करके उसके हमने इंडियन रोड, हमारे जो ये है इंस्टीट्यूट है नेशनल रिसर्च रोड ऑर्गेनाइजेशन फरीदाबाद में, वहाँ हमने उसको चेकिंग किया, उसको सेग्रीगेट किया, उसमें से प्लास्टिक, मेटल, ग्लास अलग किया और फिर वो उसको यूज़ किया। सर आपने एक कमेंट किया था, फ्रॉम अन्नदाता आवर फार्मर हैज़ बिकम ऊर्जा दाता थ्रू एथेनॉल। मैं 2009 से आपका इंटरव्यू सुनती आई हूँ, आपका एथेनॉल आपका फेवरेट है, तो आपने कहा कि आप अन्नदाता से ऊर्जा दाता और उससे बिटुमन दाता बनाना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पहली बात तो आपको एक नम्रतापूर्वक बताओ कि मेरी हर बात के एविडेंसेस है, प्रूव है, एक भी बात हवा में नहीं करता मैं 2004 से इथेनॉल की बात करता था। पहले शुगर केन से, इसमें जो शक्कर का फैक्ट्री थी, मोलाइसिस से इथेनॉल बनता था, अब शुगर केन जूस से बनता है, अब इथेनॉल ब्रोकन राइस से और कॉर्न से बनता है, और अभी आसाम में बाम्बू से इथेनॉल बनता है, और पानीपत में अब राइस स्ट्रॉ परली से इथेनॉल बनता है और बायोबिटुमिन बनता है। इथेनॉल हम 20% पेट्रोल में डाल रहे हैं, और अभी अगले महीने अगस्त महीने में मैं इथेनॉल पे 100% चलने वाली गाड़ियों को लॉन्च कर रहा हूँ। अभी बजाज, टीवीएस और हीरो, इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल 100% इथेनॉल पर स्कूटर तैयार की है। इथेनॉल का इसके साथ टोयोटो, जो उनकी कैमरी करके गाड़ी थी, जो 60% पेट्रोल और 40% बिजली तैयार करती थी, अब उसी प्रकार की टोयोटो की गाड़ी आ रही है जो 60% इथेनॉल पर और 40% बिजली तैयार करेगी। और इथेनॉल का रेट 60 रुपये और पेट्रोल का 120 रुपये। अगर ये गाड़ी आएगी तो पेट्रोल का रेट अगर हिसाब लगाया जाए तो 15 रुपये लीटर आएगा। तो देश में रिवोल्यूशन होगा, और ये पूरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, ये किसान तैयार कर रहा है। आज गन्ने उत्पादक किसानों को क्यों उनके ये गन्ने की रकम क्यों भुगतान हुई? क्योंकि इथेनॉल आया, नहीं तो हाक का उड़ जाता। और इसलिए आने वाले समय में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। आज मैं आपके स्टूडियो में आया हूँ, मेरे पास हाइड्रोजन कार है, आपको हाइड्रोजन कार में बैठ के आया हूँ मैं, फ्लेक्स इंजन की कार मेरे घर पर है, इलेक्ट्रिक का मैंने प्रचार किया, इतना प्रचार किया, इलेक्ट्रिक की बसेस सब जगह आ रही, और मुझे लोग कहते थे रास्ते में गाड़ी बंद हुई तो क्या होगा, पत्रकार प्रश्न हुए। अब पूरी इलेक्ट्रिक स्कूटर आई, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आई, इलेक्ट्रिक कार आई, अब इलेक्ट्रिक ट्रक आई, इलेक्ट्रिक बस आई, पूरा रिवोल्यूशन हुआ। 120 रुपये का पेट्रोल, 110 रुपये का डीजल और 5-6 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी, कितनी बचत होगी। और बसेस भी करेंगे आपने कहा, ऑलरेडी दिल्ली में आ गए हैं, आज देश में हजारों बसेस है जो इलेक्ट्रिक पर चल रही है। हाँ, और आपने पराली का जिक्र किया, दिल्ली में एक और प्रॉब्लम है, कंजेशन तो है ही, लेकिन जो पंजाब में जो पराली जलाई जाती है, पंजाब और हरियाणा दोनों में जो पराली जलाई जाती है, और उसका नोबडी यूजेस इट, और आप कह रहे हैं पराली से भी यूज। मैं इस एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, आप जरूर इसके ऊपर डिटेल स्टोरी बनाइए। अभी देश में 26 ऐसे यूनिट्स हैं जो ऑलरेडी पराली से बायो सीएनजी और बायो एलएनजी बना रहे। मेरा खुद का ट्रैक्टर पहला देश का मैंने सीएनजी पर कन्वर्ट किया, 1 लाख रुपए की बचत होती है। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि 135 फैक्ट्री प्रोसेस में है, और ये पराली अब शॉर्टेज हो रहा है, इसका भाव 3000 रुपये टन हो गया। कहाँ पे हैं ये फैक्ट्रीज? ये हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, आपको देखने के लिए मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। हाँ। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पराली जो फुकट में जलाते थे, उसका भाव 3000 रुपये टन हो गया। पानीपत में इंडियन ऑयल पराली से 1 लाख लीटर इथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन बना रहे। अब ये जो बिटुमिन है, हमारे देश में 80 लाख टन बिटुमिन टोटल लगता है, 50 लाख टन बिटुमिन इंडियन रिफाइनरी देती है और 30 लाख टन बिटुमिन हमको इंपोर्ट करते हैं। अब मेरी कल्पना ये है कि ये बिटुमिन हमारे किसान ट्रैक्टर मोल्डेड यूनिट, CSIR और सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किया हुआ यूनिट, मुझे प्रेजेंटेशन हुआ, अब मैं वो किसानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ, और किसान अपने ही बायोमास से बिटुमिन बनाएगा और बिटुमिन हमको बेचेगा, हम उससे खरीदी करेंगे, इंपोर्ट बचेगा। 30 लाख टन बिटुमिन अगर हमारे देश का किसान देगा तो निश्चित रूप से देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा होगा, किसान समृद्ध बनेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इंपोर्ट बचेगा और उससे स्वाभाविक से इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। और किसान अन्नदाता है, अब ऊर्जादाता बना क्योंकि इथेनॉल बना रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन बनाएगा, और उसके बाद अब किसान बिटुमिन दाता बनेगा। ये सब दिख रहा है, ये सब प्रोजेक्ट देख सकती हैं। पर जिस स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, वो कहाँ पराली को अपने ट्रैक्टर में डाल के यूनिट के पास लेके जाए? मतलब वो जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी की बात होती है ना, वो नहीं हो पाता। जब पैसे मिलते तो सब करते हैं अभी नहीं तो जलाते थे इस खेत में। हाँ, अब वो ट्रैक्टर में डालकर
वो 20-25 टन डाल के पहुंचाएगा तो 3,000 रुपये भाव मिलेगा, 75,000 रुपये, ट्रांसपोर्ट का खर्चा 10,000 रुपये, 65,000 रुपये उसके जेब में जाएंगे ना। आज तक उसको चावल से गेहूं से पैसा मिलता था, अब चावल और गेहूं का कुटार जो होता है उससे भी पैसा मिलेगा, तो फायदा ही होगा। अभी हम बाम्बू लगा रहे हैं और अभी तक वो यशस्वी नहीं हुआ है, पर मेरी कोशिश है। कहाँ पे? पूरे मैं बोल रहा हूँ गन्ने के भाव से बाम्बू खरीदी करेंगे। और उसका इस्तेमाल कहाँ होगा? उसके छोटे छोटे 3 mm से 20 mm पैलेट तैयार करके पावर में यूज़ करेंगे, बॉयलर में। और कोयले का भाव है 4,000 रुपये टन, तो ये पड़ेगा 3,500 रुपये टन। यानी पर यूनिट उसका जो फ्यूल कॉस्ट है कोयले की 1 रुपया 10 पैसे, इसकी 1 रुपया 2 पैसे पड़ेगी। तो कोयले के बजाय 16 लाख करोड़ का कोयला इंपोर्ट होता है, तो उसके बजाय बाम्बू आएगा, वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगेगा, किसानों को रोजगार मिलेगा और पर्यावरण की रक्षा होगी, पोल्यूशन कम होगा। ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम करते हैं भारत ने, वी हैव साइंड इंटरनेशनल ट्रीटीज, इसमें ये सब भी आता है? बिल्कुल आएगा। देखो 2070 में 0 एमिशन की बात प्रधानमंत्री जी ने की और करार किया है। अब हमें धीरे धीरे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस, इस पर विचार करना पड़ेगा। हमारी पावर, सोलर पावर, हाइड्रो पावर, थर्मल पावर में हम ज़्यादा नहीं जा रहे, तो नेचुरली हमारे आज पावर के बास्केट में 38% पावर ये हमारी सोलर पावर है। और इसलिए आने वाले समय में हमें इन्वायरमेंट का सोचना होगा। मैं मानता हूँ कि इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। हमारे दिल्ली जैसे शहर में आज प्रदूषण के कारण जनता त्रस्त है, हमारा लाइफ कम हो रहा है। अगर हम ये प्रदूषण हटाएंगे, मैं आपको बताता हूँ, ये 65,000 करोड़ के काम जो मैं आने वाले दिसंबर तक 99% पूरे कर दूंगा, इन कामों से दिल्ली को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इसके बाद ये फ्यूल में जो बदल रहे हैं उससे कार्बन जो इमिशन होता है उससे कम होगा, और निश्चित रूप से दिल्ली का प्रदूषण हम 2024 समाप्त होने के पहले कम करके दिखाएंगे। पूरा जाएगा ऐसा मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर एकदम सस्टेनेबल, काफ़ी सब्सटेंसिव कम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी दिखने को मिल रहा है, जिस तरह हाईवेज बन गए हैं और वो मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हुई है उत्तर प्रदेश में, पहले तो देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अब वो हाईवेज की वजह से, मतलब जैसे लखनऊ है, मुझे तो प्लेन लेके जाने का मन ही नहीं करता है, दैट दोज हाईवेज आर सो ब्यूटीफुल, सीधा वहाँ पे, और देखते देखते साइड में इकोनॉमिक एक्टिविटी पिकअप हो जाती है। मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश में मैं 3 लाख करोड़ के रोड बना रहा हूँ, 1.25 लाख करोड़ के बन गए, 1 लाख करोड़ के प्रोसेस में, और नए 1 लाख करोड़ के मंजूर कर रहा हूँ। पूरा उत्तर प्रदेश बदल गया जी। आप कहीं भी उत्तर प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी पूछो, वो बताएंगे रोड कितने अच्छे बनाए, गंगा पर ब्रिज कितने अच्छे बने, यमुना पर कितने अच्छे ब्रिज बने, सब जगह आपको अच्छे देखने को मिलेगा। ये जो बीमारू प्रदेश करके एक बड़ा ही गंदा टाइटल दिया जाता था इन राज्यों के लिए, उत्तर प्रदेश उसमें भी गिना जाता था, लेकिन अब वहाँ पे सिनेरियो बदल रहा है। बिहार का क्या कर? सेम बिहार का, मैं गंगा पर 7 पुल बना रहा हूँ। पर वो पुल गिर रहे हैं, वो जो पुराना वाला जो पुल कितनी बारी गिर, हमारा नहीं था। हाँ। वो बिहार स्टेट गवर्नमेंट का पुल पीडब्ल्यू बना रही थी। प्रॉब्लम है, आप दूसरे के बिल हमारे नाम पर मत फाड़िए। सब लोग आपके पास ही तो आएंगे कि जैसे ही कहीं पे रोड की बात हो रही है या फिर हाईवेज की बात है, गडकरी जी के आप बोलते रहिए कि मेरा नहीं है। कुछ स्टेट हाईवे है, कुछ नेशनल हाईवे है, कुछ डिस्ट्रिक्ट हाईवे है, कुछ शहर के है, कुछ डीडीए के रोड है, कुछ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के रोड है, कुछ दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के रोड है। सर पर होता नहीं है ना, जैसे ही एक अगर कहीं पे एक एक्सीडेंट हो गया या कहीं पे एक पॉट हो गया, आप ट्विटर पे देख लीजिए, नितिन गडकरी जी व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे ही होता है। ये ऐसा होगा, किसी भी चैनल ने गलत न्यूज छापी या दिखाई, सब ANI को जिम्मेदार पकड़ेंगे। करेक्ट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर मेरी प्रोडक्शन टीम कह रही है 2 विषय उनके फेवरेट क्वेश्चंस हैं, एक तो इलेक्ट्रिक हाईवेज और दूसरा म्यूजिकल हॉर्न्स। आप दोनों पे बताइए मुझे। पहली बात तो ऐसी है कि आप यूरोप में जाइए, जर्मनी जाइए, आप लंदन जाइए, कई किसी भी देश में जाइए, वहाँ इलेक्ट्रिक केबल के ऊपर बस चलती है। हाँ। 2 बसेस जोड़ के, कभी भी 3 बसेस होती है ट्राम जैसी। ट्राम में लोहे के चक्के होते हैं, अभी वो रबर के टायर आ गए। तो उस प्रकार का एक हाईवे में दिल्ली से जयपुर बनाने के ऊपर अध्ययन कर रहा हूँ और काफ़ी काम कर रहा हूँ। ये जो पानीपत के बाद जो UR2 शुरू होता है, जो द्वारका तक आता है, इससे डायरेक्ट दिल्ली मुंबई हाईवे से जयपुर तक मैं हाईवे बना रहा हूँ। वो केबल रहेगी, उसको लगकर 3 बसेस या 2 बसेस जोड़कर एयर कंडीशन बस में लोग जाएंगे, और डीजल बस का जितना किराया अभी
उससे 25-30% कम पैसे में लोग कंफर्ट से जाएंगे, फास्ट जाएंगे। ऐसी सिस्टम हम शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं और धीरे धीरे अगर ये सक्सेसफुल हो तो देश में ई हाईवे बनेंगे, उसमें ट्रक चलेंगे, बसेस चलेगी, डबल डेकर बसेस चलेगी और इलेक्ट्रिक या फ्यूल होगा। तो निश्चित रूप से आज 120 रुपये का पेट्रोल, 110 रुपये की डीजल, उधर इलेक्ट्रिक केवल 6-7 रुपये की लगेगी। तो बहुत बड़ी पोल्यूशन भी नहीं होगा, इलेक्ट्रिक हमारे देश में भी जनरेट होती है और देश का फायदा होगा। आपके लिए आपने एनवायरनमेंट का जिक्र किया, तो जब आप ये लैंड खरीदने जाते हैं, हाईवेज़ के लिए ज़मीन खरीदने जाते हैं, तो हमेशा इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। जैसे तमिलनाडु में वो कह रहे कि यहाँ पे हाईवेज़ आया नहीं, तो आपने कहा कि आपके लोग ज़मीन देने को तैयार नहीं है, इट गोज़ इनटू लिटिगेशन, ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैपन। तो एक ज़मीन का इशू, दूसरा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, हमेशा रोड को लेके एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, आप पेड़ काट रहे हैं, इतने पेड़ आपने काट लिया, इतना फॉरेस्ट वेल्थ गया, इतने मंदिर उखाड़ दिए, इतने वाइल्ड लाइफ खराब कर दिया। ये दो चीज़ों पे आप हमें बताएं। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। एक दक्षिण में फिल्म एक्टर है, विलन का काम करते हैं, सयाजी शिंदे करके, बड़े पॉपुलर हैं। अभी परसों औरंगाबाद के पास पैठन जगह पर हमने 100 साल पुराने बड़ के 61 वृक्षों को ट्रांसप्लांट किया। वो देखने के लिए मैं गया था, सभी जगह आया है। और हमने अभी तक 68,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए। द्वारका एक्सप्रेस हाईवे में 12,000 पेड़ ट्रांसप्लांट किए और देश में 3,86,000 हमने ट्री लगाई, 3-3 मीटर के पेड़ लगाए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग पर्यावरण के दृष्टि से पेड़ को लगाएं। तो स्वाभाविक रूप से हम इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। फॉरेस्ट से हमको स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ थोड़ी तकलीफें आती, पर अभी हमारी सरकार आने के बाद काफ़ी गति आई है, अब प्रॉब्लम क्लियर होते हैं। अब आपको एक बात बताओ, आजकल लोग मेरे पास इस बात के लिए नहीं आते कि मेरी ज़मीन मत लो हाईवे में। लोग इसलिए आते कि मेरी छोटी ज़मीन बाकी ये भी ले लो, क्योंकि हमारा रेट जो है वो मार्केट प्राइस से 25% ज़्यादा है। और लोगों को कैश में पैसा मिल रहा है तुरंत, चेक से। तो आप ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम चलते ही रहते हैं, थोड़े थोड़े होते ही रहते हैं। पर मैं अक्सर एक बात याद रखता हूँ कि देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटीज एंड देयर आर सम पीपल हु कन्वर्ट अपॉर्चुनिटीज इनटू द प्रॉब्लम्स। तो हम प्रॉब्लम्स को स्वीकार के जाते हैं, हमें कोई ज़्यादा अड़चन नहीं। इसीलिए तो हम आज करीब 70-80 हज़ार किलोमीटर रोड का काम पूरा कर सके 8 साल में, 80,000 किलोमीटर। तो ये इसी कारण कि हमको सब बातों की सफलता मिली। फिर भी अड़चनें हैं, हम रात दिन अड़चनों को सुलझाने का प्रयास करते हैं, राज्य सरकार के साथ मीटिंगें करते हैं और इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का हमारा अप्रोच है। अभी जो बात आपने की हॉर्न की, तो हॉर्न बड़ा कान के लिए अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैंने एक प्रपोजल तैयार किया है कि तबला, पेटी, माउथ ऑर्गन, बांसुरी, ऐसा आवाज़ आएगा हॉर्न के बजाय, ताकि वो सुनने में अच्छा लगेगा और लोग अलर्ट भी हो जाएंगे। लता मंगेशकर जी होती तो शी वुड हैव अप्रिशिएटेड इट 100%। ऐसे लता मंगेशकर जी का और मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था उनके परिवार से। एक छोटे भाई के रूप में उन्होंने मेरे ऊपर प्रेम करती थी और मेरे बारे में उनको बड़ा अभिमान था, क्योंकि मेरा 18 साल मुंबई में रहता था। तो स्वाभाविक रूप से उनको बहुत खुशी होती। आपने वो नागपुर में वो बनाया भी ना, म्यूजिकल फाउंटेन उनके नाम से बनाया। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फाउंटेन है वो। उसका इतनी ऊंचाई है, कभी आप देखने के लिए आइए। अब दूर दूर से लोग आ रहे हैं। उसका संगीत AR रहमान का है, उसकी कमेंट्री अंग्रेजी में अमिताभ बच्चन की, मराठी में नाना पाटेकर की और हिंदी में गुलजार साहब की है। और ये बनाया फ्रेंच आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया और 5 ऑस्कर विनर है जिनने उसके ऊपर काम किया है। बहुत ही अच्छा है। और उसका नाम अभी लता मंगेशकर जी का हम दे रहे हैं उसको। चलिए, आप हॉर्न्स की बात करते हैं, आप फ्यूल एफिशिएंट कार्स की बात करते हैं, नॉन फ्यूल कार्स रादर। तो आपने कहा इलॉन मस्क एंड टेस्ला वेलकम इन इंडिया, बट इफ दे वांट टू मैन्युफैक्चर इन चाइना एंड मार्केट इन इंडिया, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट इज द सीन विद टेस्ला? उनका ऐसा है कि वो आए हिंदुस्तान में, फैक्ट्री डाले, हम उनको सहयोग करेंगे। हमारे ऐसे जो नियम से कंसेशन है वो उनको मिलेंगे। पर उनका बीच में प्रॉब्लम है, हमने मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी चाइना में काफ़ी बनाई है और इसलिए इंडिया में कार लाके हमको कंसेशन दो। तो हमारे यहाँ ये कि भाई आप यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करोगे तो भी बेनिफिट मिलेगा, वहाँ बना के यहाँ कैसे मिल सकता है। इसलिए उनका स्वागत है, हम चाहते हैं कि वो इंडिया में आए। इंडिया, आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, मैं ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में वर्ल्ड में हम 4थे नंबर पे थे, अब हम 3रे नंबर पर आए और जापान 4थे नंबर पर गया। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है और तीसरे नंबर पर हम आए। और 5 साल के अंदर
हमारी इंडस्ट्री का साइज 7.5 लाख करोड़ है और मैं इस विभाग को देखता हूँ, मेरा विश्वास है हम 15 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनेंगे और वर्ल्ड की नंबर 1 मैन्युफैक्चरिंग हब ऑटोमोबाइल का इंडिया बनेगा और सब वर्ल्ड के प्लांट लगभग हिंदुस्तान में है और पूरा एक्सपोर्ट हिंदुस्तान से होगा। हमने अभी स्क्रैपिंग पॉलिसी लाई, पुराने व्हीकल से एल्यूमिनियम, कॉपर, स्टील, रबर, प्लास्टिक सब निकलेगा, उसका रिसाइकलिंग होगा, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट के भाव 30% कम होंगे, हम कॉम्पिटिटिव बनेंगे और पूरे वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट होगा। और ये इंडस्ट्री है जिसने अभी तक 4.5 करोड़ लोगों को जॉब दिया है। ये इंडस्ट्री है जिसने अभी तक सबसे ज़्यादा जीएसटी भारत सरकार और राज्य सरकार को दिया है। हमारे जीडीपी ग्रोथ में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। ये जब दुगनी होगी तो आत्मनिर्भर भारत बनेगा, जो प्रधानमंत्री जी का सपना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी और आत्मनिर्भर भारत। ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये सपना पूरा करेगी। सर, शुरू में आपने कहा था कि कैसे लोग आके आपसे कहते हैं कि ये प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, और इसमें आप ये नहीं देखते कि आपका पॉलिटिक्स क्या है, आप किस राज्य से हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है कि नहीं है। अगर देश हित में है तो आप मदद करेंगे या आप प्रोजेक्ट को क्लियर करेंगे। द पॉलिटिक्स डजंट मैटर। देखिए, पॉलिटिक्स को डेवलपमेंट के साथ मिक्सअप नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और इसलिए एक रोड शुरू होता है तो रोड अभी हमारा एक एक राज्य से जाता है, तो ये राज्य भाजपा का है और ये बाद में राज्य कांग्रेस का है, तो क्या रोड के काम मैं बंद करूँ? रोड भारत की जनता के लिए है और मैं केवल भाजपा का मंत्री नहीं हूँ, मैं भारत सरकार का मंत्री हूँ और इस देश के सब लोगों के लिए काम करना मेरा कर्तव्य है। जिन्होंने हमें वोट दिया उनका भी काम करें, जिन्होंने नहीं दिया उनका भी करेंगे, जो विरोध करेंगे उनका भी करेंगे। सही काम सबका होना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है और उसी के आधार पर हम काम करते हैं। पर क्या कोऑपरेशन मिलता है? जैसे अगर आप बंगाल में रोड बनाना चाहते हैं या तमिलनाडु में, जहाँ पे बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, आप तमिलनाडु में बनाते हैं तो सब जगह मिलता है। मेरे पास पंजाब के मुख्यमंत्री आए थे परसों, हर मुख्यमंत्री आते मेरे पास, मैं उनके साथ बैठता हूँ, मीटिंगें करता हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ममता जी भी आती है, साउथ के भी सभी आते, चीफ मिनिस्टर आते हैं, मंत्री आते हैं। अगर होता है तो उनको कहता हूँ ये काम आप करा दो और वो करते हैं। थोड़ा कभी देरी होती है, फॉलोअप करना पड़ता है, मीटिंगें होती है, हो जाता है। पर एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर क्या बीजेपी के कार्यकर्ता आपके पास नहीं आते कि क्यों कर रहे हो आप वहाँ पे काम, इलेक्शंस आने वाले हैं, मत कीजिए? उल्टा ऐसा होता है कि मैं जब बंगाल में काम करता हूँ तो हमारे कार्यकर्ता हमारी सरकार की उपलब्धि में उसको गिनाते हैं कि हमारी सरकार ने ये रोड बनाई, ये ब्रिज बनाया, ये फ्लाईओवर बनाया, तो इसका हमको फायदा ही होता है। जो काम हम मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सब जगह कर रही है उसका फायदा ही है। मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ आ रही हूँ। आपने कहा था ये सिलेबस को लेके, कर्नाटका में जो सिलेबस को लेके बात चली थी कि सावरकर वो जो चैप्टर डिलीट किया था, तो उसमें कांग्रेस ने कहा कि गडकरी जी ऐसे कह रहे हैं क्योंकि अमित शाह जी और मोदी जो हैं वो दे आर नॉट वेरी फेवरेबल टुवर्ड्स गडकरी जी। मतलब उसका उन्होंने दूसरा ही मतलब निकाल लिया था जब आपने सावरकर के बारे में। वाई सावरकर सो इम्पोर्टेंट फॉर महाराष्ट्रियंस? नॉट फॉर महाराष्ट्रियन, फॉर देश। हाँ जी। सावरकर ने जो कुर्बानी दी है, जो त्याग किया उनके परिवार ने, वो हिंदुस्तान के इतिहास में इतना बड़ा त्याग किसी परिवार ने नहीं किया। सावरकर ने अपना जीवन पूरी तरह देश के लिए समर्पित किया है और इसलिए कई विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर उनके त्याग, बलिदान, तपस्या के बारे में नहीं होता। जो कष्ट उन्होंने सहन किए, जो यातनाएं सहन की है, और आद्य क्रांतिकारक है और निश्चित रूप में देश के लिए प्रेरणा का विषय बने हैं और इसलिए ऐसे विषयों की राजनीति करना बहुत बुरी बात है। चाहे सावरकर जी हो, चाहे हेडगेवार जी हो। हेडगेवार जी तो एक समय हमारे विदर्भ के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी थे। देखिए, हमारे देश में लोकतंत्र को यशस्वी करने के लिए हमको टॉलरेंस चाहिए। मतभिन्नता होना स्वाभाविक है, पर मनभेद नहीं होने चाहिए। मतभेद हो सकते हैं और इसलिए यही अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था और इसलिए सावरकर जी के बारे में जिस प्रकार का ये काम कर्नाटक के सरकार ने किया बहुत ही गलत है और दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कांग्रेस तो आप पर आरोप लगाती है, आप मतलब बीजेपी पर आरोप लगाती है कि टॉलरेंस फॉर मल्टीप्लिसिटी ऑफ थॉट्स, वैल्यूज़, आइडियाज़ वो बीजेपी में है नहीं। वो एक ही सिस्टम लाना चाहती है और पूरे देश में वही, चाहे भाषा की बात हो या फिर एनीथिंग, दे वांट वन सिस्टम। गलत बात है, ऐसा हम कहीं लाना नहीं चाहते। हमारी श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल जी, अडवाणी तक और आज मोदी तक यही परंपरा रही है
सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबको साथ लेकर जाना, ये गलत प्रकार की बातें कही है। जिन लोगों ने इस देश में इमरजेंसी लाई और अपोजिशन पार्टी को 2 साल जेल में बंद रखा, वो क्या बात कर सकते हैं? हमारे व्यवहार में हमने कभी ऐसा काम नहीं किया और ना करेंगे। और कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि अगर बीजेपी 2024 में वापस आती है तो संविधान नाम की कोई चीज़ रहेगी ही नहीं। लेकिन आपने कहा कि संविधान जो है वो हमारे लिए गीता है। देखिए, संविधान हमारे लिए गीता है, हमारा विश्वास है, और ये बात पूरी तरह गलत है और ये गलत अपप्रचार है। ये बहुत बार ऐसा अपप्रचार कुछ विपक्षी पार्टी की तरफ से होता है, पर हम संविधान का सम्मान रखते हैं और निश्चित रूप से संविधान हमारे लिए आत्मा है, हमारे लिए गीता, बाइबल और कुरान जैसा है, और संविधान को बदलने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आप शुरू से ही यू वर नॉट शाई अबाउट योर आरएसएस लिंक्स। आप नागपुर के ही हैं और आरएसएस के कार्यकर्ता रहे हैं। आप में ज़रा भी झिझक नहीं होती आरएसएस को आपने शुरू से ही, यू हैव नॉट शाइड अवे फ्रॉम इट कि मैं हूँ आरएसएस का कार्यकर्ता, आई रिप्रेजेंट आरएसएस। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आरएसएस की जो विचारधारा है वो बहुत ही पोलराइज्ड विचारधारा है। इट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग ऑफ अदर रिलीजन्स, अदर थॉट प्रोसेसेस। नहीं, गलत बात है। आरएसएस किसी को पोलराइज नहीं करता। हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदू जीवन पद्धति और हिंदू शब्द के अनेक प्रकार के अर्थ लगाए जाते हैं। हमारे यहाँ सावरकर जी ने हिंदू शब्द की व्याख्या की थी, सिंधु नदी से लेकर अरबी समुद्र तक जो लोग हिंदुस्तान को अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानते हैं वो सब हिंदू है। संस्कृति सबकी एक चिरंतन पुरखे जिसके हिंदू है, विराट सागर समाज अपना हम सब इसके बिंदु है। हमारी बिल्कुल विचारधारा साफ है कि किसी की उपासना पद्धति अलग हो, कोई मस्जिद में जाएगा, कोई गुरुद्वारा में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, कोई और कहीं भी जा सकता है। उपासना पद्धति अलग है, पर मेजॉरिटी हम हिंदू है। हमारे मुसलमान जब बाहर जाते हैं तो उनको कहते हैं ये हिंदू मुसलमान है, इंडियन मुस्लिम है। तो इसका मतलब क्या वो हिंदू हो गए क्या? जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन सब विषयों का, शब्दों का सही अर्थ निकाल कर समझना। हिंदू ये संकुचित शब्द नहीं है, हिंदू ये सर्वसमावेशक है। सहिष्णु, सहजता, सरलता और सर्वसमावेशकता, ये हिंदुत्व की परिभाषा है। जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से ऊपर उठकर किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हिंदुत्व नहीं मानता। और हिंदू ये जीवन पद्धति है। आज आप देखिए कि जैसे आप कहेंगे पत्रकारिता मेरा धर्म है, उसका मैं पालन करूँगी, यानी क्या है? धर्म का अर्थ कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और मुझे लगता है वो स्वयं स्पष्ट है। पर अब प्रॉब्लम यह है कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन सब शब्दों को गलत मीनिंग देकर अपप्रचार करके लोगों में झगड़ा लगाने की कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए कोशिश करते हैं। वो नहीं होनी चाहिए और लोगों ने सही अर्थ में इसको समझना चाहिए। यही हमारी सबकी अपेक्षा है। लेकिन जहाँ पर राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, खरगे जी हो, जो भी हो, वो जब कमेंट्स आरएसएस के बारे में करते हैं आपको उसमें नहीं गिनते हैं, आपके पास हमेशा आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बाकी जो आरएसएस के जो बीजेपी में हैं शामिल, उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, लेकिन आपके बारे में कोई कुछ नहीं कहता? देखिए, मैं आपको पहली बात बता दूँ कि मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। संघ इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन, और मैं जो कुछ हूँ वो संघ के संस्कारों के कारण, विद्यार्थी परिषद के संस्कारों के कारण हूँ। मैं बहुत सामान्य व्यक्ति हूँ और मुझे कुछ अच्छा कार्य करते समय जो संस्कार मिले उससे मेरा व्यक्तित्व परिपूर्ण हुआ और आज मैं वही व्यवहार करता हूँ। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है। अगर वो नज़दीक आएंगे, अनुभव लेंगे, तो जिनके जिनके मन में गलतफहमी वो निकल जाएगी। आप कई दशकों तक राजनीति में रहे हैं, महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, दिल्ली पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन जिस तरह अब ये जो अटैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल ही विशियस अटैक्स ऑन ईच अदर, क्या आप समझते हैं कि ये इसको अब सुधारने का कोई तरीका ही नहीं है? क्या सोशल मीडिया भी इसके लिए आप मुझे लगता है कि हमारे लोकतंत्र में गुणात्मक परिवर्तन करके विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, पर हम जिस प्रकार का आचरण करते समय हम हमारे विपक्षियों की विरोधी विचारधारा को भी सहिष्णुता के साथ स्वीकार करें। मुझे लगता है हमारे देश में जब से हमसे स्वाधीनता मिली, हमारी लोकतांत्रिक परंपरा, और जहाँ तक हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला,
तो हमने हर समय इस बात का जिक्र करके सबका सम्मान करते हुए राजनीति की है, और यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। और आज भी मोदी जी के नेतृत्व में हम ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन करके किसी के साथ कोई अन्याय करना नहीं चाहते। आप और राजनाथ जी और कुछ और भी हैं जो वाजपेयी अडवाणी एरा के भी रहे हैं, वहाँ उनके साथ भी काम किया है, और अब मोदी जी के अंडर भी हैं, उनकी कैबिनेट में भी हैं। तो भाजपा में क्या फ़र्क है उन वाजपेयी जी के जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और अब मोदी जी? आपने दोनों के साथ काम किया है, देखो उनकी कार्यशैली अलग है? नहीं, मोदी जी ने भी वाजपेयी जी के साथ, अडवाणी जी के साथ काम किया है, और जिस समय वो पद्धति आज भी वही पद्धति है, कन्विक्शन वही है, उद्दिष्ट वही है। राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है, गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा उद्दिष्ट है, और अंत्योदय सामाजिक आर्थिक चिंतन गरीब व्यक्ति के प्रति ये हमारा उद्दिष्ट है, मिशन है। तो यही बात को लेकर हमारा गरीब कल्याण के कार्यक्रम वही बात चल रही है। अब कुछ लोग अपने को अपने अपनी सुविधा से उसके अलग अलग अर्थ लगाते, पर जब कल थे वो आज है वो कल रहेंगे। हमारी विचारधारा वही है, और मोदी जी, अटल जी, अडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हम सब लोग एक ही दिशा से जा रहे हैं। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना एक इनोवेशन है गवर्नेंस में आपके मतलब मोदी जी के कैबिनेट में? ये बिल्कुल अच्छी बात है कि मोदी सरकार की विशेषता रही है कि लगातार हर चीज़ उन्होंने टेक्नोलॉजी ड्रिवन की है, डिजिटल सिस्टम को प्राधान्य दिया है, और बेस्ट टेक्नोलॉजी को इनकरेज किया है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी ये देश का भविष्य है। मैं अक्सर एक बात दोहराता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज, एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इज़ द फ्यूचर। दूसरी बात मैं दोहराता हूँ जो संघ विचारधारा से जुड़ी हुई है कि नो मटेरियल इज़ वेस्ट, नो पर्सन इज़ वेस्ट। इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द अप्रोप्रिएट विजन ऑफ द लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो हम इसी बात पर चलते आए हैं। सर, आप इतनी बारी इलेक्शंस लड़ चुके हैं, लोकसभा, स्टेट, पर टेल मी समथिंग कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स कभी, इट यूज्ड टू बी जेंटलमैनली पॉलिटिक्स, सब लोग एक दूसरे से बात करते थे, कभी इतना विशस नहीं हुआ, इतना ख़राब नहीं हुआ, स्तर इतना गिरा नहीं जितना आजकल है। ऐसे क्यों हुआ? देखिए, आजकल तो मैं महाराष्ट्र से काफ़ी दूर हूँ, अब नागपुर से डायरेक्ट दिल्ली आता हूँ, ज़्यादा डिटेल मैं जानता नहीं हूँ, पर ओवरऑल मैं किसी को जिम्मेदार नहीं मानता। पर मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र पर जिनका विश्वास है, जो लोकतंत्र को यशस्वी करना चाहते हैं, सब लोग मिलकर हम लोकतंत्र को क्वालिटेटिव बनाएं, गुणात्मक बनाएं, और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के उद्दिष्टों को ध्यान में रखते हुए हम एक स्तर बनाकर सबने मिलकर राजनीति करना ही, इसमें ही लोकतंत्र का हित है, इसमें ही देश का हित है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा हिंदुस्तान का वर्णन करते हैं। हम दुनिया के सामने अपने व्यवहार से एक आदर्श तैयार करें ताकि यशस्वी लोकतंत्र कैसा हो सकता है और यशस्वी लोकतंत्र में चाल चलन, व्यवहार, चरित्र कैसा हो सकता है। तो मुझे लगता है दुनिया हमारे तरफ अपेक्षा से देख रही है। ये किसी एक पार्टी का सवाल नहीं है, किसी दल का सवाल नहीं है। हम सब लोग मिलकर लोकतंत्र की गुणवत्ता, उसमें गुणात्मक परिवर्तन करके हम निश्चित रूप से बदल करने की कोशिश करें, हम सब लोग मिलकर, यही मेरी भावना। फॉरेन मीडिया बहुत कहती है कि डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट, ऑपोजिशन भी कहती है कि अंडर बीजेपी, अंडर मोदी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया, लेकिन बहुत कमेंटेटर्स ऐसे हैं जो भारत से बाहर बैठ के कहते हैं कि भारत के जो इदारे हैं वो सब सबवर्ट किए गए हैं। चाहे आप सीबीआई की बात करिए, ईडी की बात करिए, सबको इस्तेमाल किया जाता है इलेक्शन जीतने के उद्देश्य से। मुझे नहीं ऐसा लगता। कोई भी व्यवस्था खड़ी होती है वो अपना काम उनके कानून के आधार पर करती है, और कानून में जब कोई लोग छपड़ते हैं तो वैसे आरोप लगाते हैं। हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमारी कोई यंत्रणा का मिसयूज हम नहीं करते, ना करेंगे। सर, इस साल काफ़ी सारे मेजर इलेक्शंस होने वाले हैं, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बड़े स्टेट्स हैं, बड़े राज्य हैं। कर्नाटका हारने के बाद आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि इन राज्यों में आपकी सरकार फिर से वापस आएगी या फिर सरकार उलट के आपकी सरकार आएगी? नहीं, मेरे हिसाब से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इसमें हम 100% जीतेंगे, और तेलंगाना में हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ेगी, हम ताकतवान बनेंगे, प्रमुख विपक्षी दल बनेंगे, इससे मेरा विश्वास है। और अगर समय अच्छा आएगा तो हम वहाँ भी बहुत अच्छा लीड ले सकते हैं।
और 2024 100% जीतेंगे। जिस प्रकार से हमने 10 साल में 9 साल में जो काम किया है, जो देश का भविष्य बदला है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हुई है, लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए हैं, फिर से एक बार जनता अपने विकास के लिए और देश के लिए हमें चुनकर देंगी मोदी जी के नेतृत्व में, ये मेरा विश्वास है। सर, हाल ही में ये गीता प्रेस को लेकर बहुत विवाद उठ खड़ा हुआ है। कांग्रेस ने कहा है कि इट्स लाइक गिविंग अ प्राइज टू सावरकर। इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? नहीं, एक तो मुझे हर बात कांग्रेस ने कहे उस पर कहने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार की गलत बातें बोलते बोलते कांग्रेस की अवस्था कैसी वो जानते हैं। महात्मा गांधी जी को गीता के बारे में कितना प्रेम था ये सब जानते हैं, और गीता प्रेस ने गीता प्रसार का काम कितनी निष्ठा से पिछले अनेक सालों से किया ये भी जानते हैं। उसके ऊपर ऐसी प्रतिक्रिया देना यानी गांधी जी के विचारों के विरोध में बात करना, ऐसी बात हो जाएगी, इतना ही मैं कहना चाहूँगा। सर, ये जो इलेक्शंस की बात कर रहे थे हम कि 3 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अभी कर्नाटका में आप चुनाव हारे हैं, आपकी पार्टी, तो उसमें और उससे पहले भी जब जो भी चुनाव हारे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ये रेवड़ी कल्चर इज़ बैड और फ्रीबी कल्चर। अब फ्रीबीज और रेवड़ी से अगर इलेक्शन जीता जा सकता है तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए आपकी पार्टी ऐसे नहीं करेगी? देखिए, एक बात समझ लीजिए, इस देश के डिस्कॉम करीब 18 लाख करोड़ से लॉस में है, और इसी प्रकार से बिजली मुफ्त देने की स्पर्धा रहेगी तो हमारा बिजली का क्षेत्र खत्म हो जाएगा। हमारे देश में इसी मिक्सी बांटना, इडली पात्र बांटना, इडली बांटना, ये बांटना, फुकट की चीज़ें सरकार के पैसे से बांटने से राजनीति नहीं होगी। हम रोजगार निर्माण करें, गरीबों को घर बना के दें, स्वच्छता करें, कचरा मुक्त देश बने, स्वच्छ भारत बनाए, हम नई इंडस्ट्री लाएं, लोगों को रोजगार क्रिएट करें। ये लॉन्ग टर्म, ये जो परमानेंट उपाय है जो देश के विकास के, वो करने चाहिए। चुनाव जीतने के लिए केवल ये रेवड़ी बांटने से देश का भी नुकसान होगा, आर्थिक स्थिति का भी नुकसान होगा और समाज का भी नुकसान होगा। अब जब फुकट में चीज़ कोई मिलती है तो लोगों का उसका महत्व नहीं होता। तो मुझे लगता है कि लोगों को जहाँ ज़रूरी होगी वहाँ ज़रूर उनको कंसेशन देना चाहिए, पर इस प्रकार की राजनीति चुनाव को देखकर जो हो रही है वो लोकतंत्र के लिए घातक है, अच्छी बात नहीं है। तो ये जो 3 चुनाव महत्वपूर्ण, 3 और 4 तेलंगाना भी है, तो इन चारों में आप सोचते हैं कि ये रेवड़ी वाली जो बात है ये फिर से नहीं उठने वाली? फ्रीबीज किसने क्या करना चाहिए लोकतंत्र में उसका अधिकार है, पर लोग अब सुसंस्कृत बने, सुशिक्षित भी है और समझदार बने हुए। उनको समझ में है कि कैसे वोट देना, किसको देना, लॉन्ग टर्म देश का और राज्य का हित किस में है और कौन हमारे भविष्य को बदल सकता है। और पिछले 10 साल का हमारा जो अनुभव है, जो 75 साल हमारे स्वाधीनता को हुए हैं, कांग्रेस को 60 साल अवसर मिला। जो कांग्रेस 60 साल में जो कर नहीं सकी वो हमने 10 साल में करके दिखाया। इसी के आधार पर लोग हमें वोट देंगे और फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में हम जीतेंगे, यही मेरा विश्वास है। जी, थोड़ा सा आपकी पर्सनल लाइफ में आती हूँ। आपका जो वेट लॉस रेजीम, तो इसमें आपने मेरे को थोड़ा सा टिप्स देना है कि आप कैसा आपका रेजीम चलता है, डाइट का, एक्सरसाइज का, मेडिटेशन का, आप क्या करते हैं टू बी फिट? मैं ये कई सारे बीजेपी पॉलिटिशियन से पूछती हूँ क्योंकि फिटनेस इज बिकम अ मेजर थिंग, योगा एंड थिंग्स। तो देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मेरा पूरा लाइफ बहुत ही इनडिसिप्लिन था, पर अभी मैंने कोविड के बाद काफ़ी रेगुलराइज किया। रोज़ मैं 1.25 से 1.5 घंटा प्राणायाम करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। मेरा वजन 135 किलो था, 85 किलो पर आया, 50 किलो वजन कम हुआ है। कितने साल लगे आपको ये समझ लिया 11 के बाद। 2011 में मैंने ऑपरेशन किया था, 2010 में या 11 में, ये 12 साल में मेरा कम हुआ है। और एक बात जरूरी कि अब मेरा खाने में वगैरह भी काफ़ी नियमित है। पहले मेरे कंट्रोल नहीं था, अब मैं 2 रोटी, थोड़ा सा चावल, सब्जी और सादा भोजन सुबह शाम करता हूँ और खाने में एकदम क्वांटिटी कम की है। और मुझे प्राणायाम से बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है, मेरा लाइफ बदल गया है और मुझे बहुत खुशी है कि अब मैं बहुत फिट हूँ। तो अब ये जो फिट इंडिया जो है, इट हैज़ बिकम अ बिग थिंग। मोदी जी जो हैं वो योगा दिवस वगैरह उसको बहुत प्रमोट करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में जो ये किया है उससे कितना फ़ायदा हुआ है आपको लगता है? फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ है। मेरी पूरी ज़िंदगी पूरी अनप्लान, इनडिसिप्लिन और खाने में कोई कंट्रोल नहीं था। कैसे हो सकता है? आरएसएस में रहे हैं आप, तो वहाँ पे तो एक्सरसाइज होती है, शाखाएं होती है। नहीं, फिर पर भी वो मेरा बहुत उस समय पर, अभी मैंने बहुत अच्छा लाइफ है, मैंने काफ़ी कंट्रोल किया। पहले मैं
पूरी प्लेट की प्लेट खाली करता था। अभी मैं बहुत, ये भी बीजेपी वालों के साथ बहुत है, खाने के शौकीन बहुत होते हैं ना। जेटली जी भी ऐसे ही थे, अरुण जेटली, उनके यहाँ भी पकवान पता नहीं कहाँ कहाँ से आता था। आपके घर में भी तो आता है नागपुर में, कम लोगों को खिलाते हैं आप? खिलाते भी, पर अब मैं सीमित खाता हूँ। पहले जैसे अमर्याद खाता था वैसे आज भी मेरी नियत में कमी नहीं आई है। पूरी और आमरस रात को मैं नए नए व्यंजन खाने में इंटरेस्ट रखता हूँ, होटल में जाता हूँ, कभी अलग अलग चाइनीज मैं वेजिटेरियन हूँ, पर खाता सब हूँ, पर अब लिमिट है, कंट्रोल करके खाता हूँ। जब मैं पहली बार आपसे मिली थी, आप महाराष्ट्र से दिल्ली आए थे। मैं आपको कंपैरिजन करने में पूछूंगी कि दिल्ली का जो भोजन है, आपको इस दिल्ली के पकवान कौन से अच्छे लगते हैं? सही बताओ तो दिल्ली में सब घर पर आलू पराठा और पनीर, यही ज़्यादा कॉमन होता है। हाँ। मुंबई जैसा फूड कहीं नहीं मिलता। सच में? हाँ, मुंबई में सब प्रकार का फूड आधी रात को आपको मिलेगा। हाँ। मुंबई इसमें जन्नत है। हाँ। खाने के लिए मजा जो है असली मुंबई में। और आपके फेवरेट्स क्या होंगे? मेरे बहुत फेवरेट है मुंबई में। मैं बहुत से होटल जब जाता हूँ रात को, तो होटल रेस्टोरेंट में जाता हूँ खाना खाने के लिए। पर वहाँ पे आपको सिक्योरिटी वगैरह का कोई प्रॉब्लम? रात को 11 बजे के बाद 2-3 पुलिस वाले लेके चला जाता हूँ। चले जाते हैं आप? फुटपाथ पे खाना है। हाँ। स्ट्रीट फूड ही अच्छा है। हाँ। तो जरा रात को जरा रोश कम हो जाता है, बंद होने के समय चला जाता हूँ। तो लोग पहचानते हैं आपको? पर पहचानते, थोड़ी बहुत तकलीफ होती है। हाँ, लेकिन जैसे बॉम्बे में रहने वाले लोग सब कहते हैं कि अरे दिल्ली स्ट्रीट फूड इज द बेस्ट, लेकिन आप तो उल्टा कह रहे हैं कि बॉम्बे स्ट्रीट फूड इज द बेस्ट। बॉम्बे स्ट्रीट फूड की बराबरी कोई कर नहीं सकता। अच्छा, सोशल मीडिया में इन दिनों, मतलब मई, जून, जुलाई, इन 3 महीने में सीरियस मैंगो वॉर्स चलते हैं। जो नॉर्थ के लोग हैं वो दूसरे आम के बारे में बात करेंगे, जो मुंबई वाले हैं वो कहेंगे कि आप उसके के कंपैरिजन में कोई भी आम नहीं है। अब मैं ऑब्वियसली गोइंग टू आस्क यू, क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं मुंबई के। जो सच्चाई वो सच्चाई है। हाँ? हमारे यहाँ आम का राजा अल्फांसो हापुस को ही कहते हैं, और हापुस जैसी टेस्ट किसी को नहीं है। तो इतने साल दिल्ली में रहने के बावजूद आपको दिल्ली के आम पसंद नहीं है या नॉर्थ के आम पसंद नहीं है? मैं ये पसंद नहीं, ये भी अच्छे हैं, पर अगर आप क्वालिटी में पूछोगे, टेस्ट में पूछोगे, तो हापुस की बराबरी कोई नहीं करता, ये बता रहा हूँ। यहाँ के भी अच्छे हैं। ओके, अब 2024 में आप इलेक्शन लड़ेंगे फिर से? हाँ, बिल्कुल लड़ूंगा। नागपुर से ही? हाँ, नागपुर से। और आपको एक अगर नंबर दिया जाए कि आप एक नंबर पिक कीजिए कि 2024 में कितनी सीटें आएंगी बीजेपी के? जितनी आज है उससे ज़्यादा सीटें आएगी, और हम निश्चित रूप से 2/3 मेजोरिटी लेकर विजयी होंगे मोदी जी के नेतृत्व में, ऐसा मुझे विश्वास है। ऑपोजिशन यूनिटी के बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, ये कितनी भी यूनिटी करे तो भी लोग हमको साथ देंगे, देश का विकास करने के लिए, देश का भविष्य बदलने के लिए, और जनता को पता है कि उनका हित किस में है। जनता हमको चुनकर देंगी, ये मेरा विश्वास है। तो जनता राहुल गांधी में हित नहीं देखती? वो जनता किसको देखती नहीं देखती ये मेरा विषय नहीं, पर हमारे में देखती है। हमें जनता सपोर्ट करेगी और हम चुन कर आएंगे, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। लोग ऊब नहीं जाते हैं सर? आपने भी देखा हुआ है कितने इलेक्शंस हो जाते हैं। जैसे वाजपेयी जी के सामने जब वाजपेयी जी इलेक्शन लड़ रहे थे तो एवरीबडी यूज्ड टू से, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल दिया था, वाजपेयी वर्सेस हु। उस टाइम प्रमोद महाजन थे, मतलब इंडिया शाइनिंग प्रोग्राम था, भारत में इतने हाईवेज बोलने वाले बोलते रहते हैं, चलने वाले चलते रहते हैं, लिखने वाले लिखते रहते हैं, शो ऐसे ही आगे चलते रहता है। और ये ऐसे ही चलता रहेगा, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि आखिर कभी पैशन के लिए होता है, कभी पेट के लिए होता है। ये ऐसे ही चलता रहेगा। जो अच्छा है वो लेते रहना चाहिए, जो गलत है उसको छोड़ देना चाहिए और चलते रहना चाहिए। आपका कोई पर्सनल गोल है सर कि मैंने ये करना है? आपने इतने सारे तो हाईवेज गिना दिए कि मैंने इतने रोड बनाने हैं, मैंने इतना करना है। अंत्योदय के बारे में आपने कहा, दैट इज़ योर वन ऑफ योर गोल्स, जो आप वो उससे आप कभी हिल नहीं सकते। मैं अभी सोशल एंटरप्रेन्योर करके अनेक प्रोजेक्ट्स में काम करता हूँ, किसानों में काम करता हूँ, मजदूरों में काम करता हूँ, स्वास्थ्य विषयक सुविधाएं करता हूँ, अनेक प्रॉब्लम में लोगों की मदद करते रहता हूँ। और मुझे लगता है कि वी नीड टू रिडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। पावर पॉलिटिक्स इज नॉट द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स। समाज कारण, राष्ट्र कारण और विकास कारण। राजनीति, लोकनीति और बृहत्तर राजनीति यानी सोशल वर्क है। गरीबों की सेवा करना, आखिरी व्यक्ति पायदान पर जो खड़ा है उसको रोटी, कपड़ा और मकान दिलाने की कोशिश करना। और पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। ये समझकर काम करते रहना चाहिए। यही मेरा संस्कार है, मेरा भाव है और मेरा कन्विक्शन है। जितना संभव होता है मैं उस उद्दिष्टों को सामने रखकर काम करते रहता हूँ
और करते रहूँगा। जब आप यूथ को मिलते हैं, इतने सारे आते हैं स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं 20s इन देयर 30s, आप उनको कहते हैं कि राजनीति में आओ या कहते हैं नहीं नहीं ये तो एक दलदल है इसमें मत आओ? मैं युवाओं को मिलते रहता हूँ। मुझे 6 डिलीट मिली है। 4 एग्रीकल्चर साइंस में महाराष्ट्र की यूनिवर्सिटी की मिली और 2 गलगोटिया और SBM यूनिवर्सिटी की मिली। तो मैं अक्सर इनोवेशन, एग्रीकल्चर, वाटर कंजर्वेशन, इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, कंस्ट्रक्टिव वर्क, ये काम खुद भी करता हूँ और लोगों को भी सपोर्ट करता हूँ। और टेक्नोलॉजी मेरी पैशन है। वर्ल्ड में क्या चेंज हुआ है, तो नेचुरली मुझे सुनने वाला बहुत बड़ा क्लास है हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी है। यूट्यूब पर वगैरह मैं बहुत पॉपुलर होता हूँ। कभी कभी 2 लाख 2.5 लाख मुझे पैसा महीने में मिलता है। वर्ल्ड में लोग सुनते हैं, बच्चों में ये सब बातें जो नए रिसर्च की होती है, इनोवेशन की अच्छी लगती है। तो मैं युवाओं को मिलने में खुशी रहती है मुझे, ताकि वो देश का भविष्य है, उनके साथ बातचीत करने में मुझे बड़ा आनंद आता है। जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपका फेवरेट डेस्टिनेशन कौन सा होता है? जब देश के बाहर जाना या देश में ही आप कोई पर्यटक स्थल ढूंढते हैं? मैं इतना चॉइस वाला नहीं हूँ। मैं तो चला जिधर चले रास्ता, मुझे क्या पता कहाँ मेरी मंजिल। न मेरे राजनीतिक जीवन में कोई ऐसा महत्वाकांक्षा है, न व्यक्तिगत जीवन में है। खाता पीता हूँ, खुशी से रहता हूँ, आनंद से चलता हूँ। वो बहुत दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि टू बी हैप्पी, टू बी इन अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर वन इज। अभी आपको एक बात, भूटान के प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, सुखांक। तो मैं सोचता हूँ कि हर क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति का सुखांक क्या है, क्या क्या चाहिए उसको। तो उसके आधार पर हम काम करके ऐसी व्यवस्था बनाएं कि हमारे सभी स्टेक होल्डर, हमारे समाज के सभी लोग सुखी, समृद्ध और संपन्न जीवन व्यतीत करें। और आप सिंपल लिविंग में भी विश्वास करते हैं। मैंने देखा था आप शॉपिंग के लिए चले गए थे अपने ग्रैंड डॉटर के लिए गिफ्ट लेने के लिए। हाँ, कॉमन मैन जैसा ही रहना चाहिए। मुझे खुशी होती है, रास्ते पर भेलपुरी खाते समय आनंद होता है। अभी मर्यादा आई है, पर मैं अक्सर कहता हूँ रिस्पेक्ट शुड नॉट बी डिमांडेड, इट शुड बी कमांडेड। इफ़ यू डिजर्व फॉर इट यू विल गेट इट। तो मुझे सादी रहना, लोगों में रहना अच्छा लगता है। अब सुरक्षा के कारण कुछ मर्यादाएं आती है, तो वो मेरी मर्यादा है, पर मैं छोटा आदमी, सामान्य व्यक्ति, दोस्त मित्रों के साथ ऐसे ही रहना चाहता हूँ। आई होप आप ऐसे ही रहें एंड मोर सक्सेस एंड पावर टू यू। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। Thank you for watching or listening in to this edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes. We were at $500 billion in the year 2021. In the year 2023, the year just gone by, we grew from 675 to 776 billion. Prime Minister Modi has consistently been guiding us that we should bring out high quality products from India. It's not only about our exports, it's our consumers. Okay. I am responsible to 140 crore Indians. But when we talk of self-reliance, we are not closing India's doors to international engagement. If you at all ask me, I think we are opening them wider. The people of India are smart and understand what's good for them. They don't want to be a Sri Lanka or a Pakistan. From a fragile 5 economy 10 years ago to the world's 5th largest economy. The mics are determined by the chair, and no mic goes off for anybody, but there's a time limit. It's an absolute travesty of the truth to suggest that the mics are switched off for the opposition members. They're switched off for ruling party member. If you have the Shiv Sena, where Uddhav Thackeray was suddenly chosen out of the blues, whereas Raj Thackeray seemed to be the natural heir. As they say, blood is thinner than water. He wanted his own son. It's important that political families, instead of treating their parties as fiefdoms, should start respecting actual activists who can do good for the country. With the Delhi Ordinance, how is it going to work? It'll be passed in the parliament. So it's going to pass in the Rajya Sabha. You're 100% certain about that. Whenever there was something my wife was very sure of, she would say 110%. Okay. So that's what I'll use today. 110%. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash.
My guest today is a second-generation politician from the Bharatiya Janata Party. He has seen policies and programs being formed in the party in the Vajpayee-Advani era and now to the Modi-Shah era. Piyush Goyal is known to be part of the group of ministers which is on a mission mode to accomplish goals set before them before campaigning begins for the 2024 general election. Mr. Goyal has held several portfolios in the cabinet, but currently he is Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs and Public Distribution, Minister of Textiles, and is leader of the Rajya Sabha. In his tenure as Minister of Commerce and Industry, India achieved its highest ever exports of about $675 billion in 2021-22. Piyushji, thank you so much for being part of this podcast. I've been looking forward to speaking with you. I've interviewed you before, but not as part of the podcast. This is a completely different format, but you are mahir in all this. You've done a podcast before. So let's begin with, you have a zillion portfolios. So let me begin with commerce and industry first. What are the steps that your government is taking to boost exports? I want to know, because I've just read out in the introduction that the highest ever exports under your tenure, which we had, which is $675 billion, is 2021-22 is what I've heard. So tell me, how did you get here? What was your goal that was set before you? And what is the goal for the next year now? Thank you very much for giving me this opportunity, Smitaji. Truly a delight to engage with this new form of communication which is taking the world by storm. And I had the opportunity to see some of your shows. They're really quite interesting, very engaging, very enjoyable. Thank you. Smitaji, exports are the strength of an economy. Particularly when you're producing high quality products, they help you reach out to newer markets, they help you on foreign exchange, they provide jobs to crores of your brothers and sisters. And Prime Minister Narendra Modi is very focused that if India has to become a developed nation, we will have to look at greater international engagements. On 6th of August 2021, in the middle of COVID, he addressed all the industry associations, captains of industry, all our export promotion councils, all the line ministries who are engaged with products, goods and services which are exported. And he truly gave a very, very inspiring address. He brought the best out of each one of us and got the whole ecosystem in the true spirit of the whole of the government approach. Here he made it a whole of the nation approach and got the best coming out of all stakeholders related to the export sector. So we've tried to make ease of doing business so that more people can venture into newer areas. We focused on expanding existing markets, existing sectors, also looked at new sectors, new markets, virgin areas where we had not ventured before. We engaged 180 missions across the world, and all mission heads were given a KPI, a key performance indicator. For those who don't know, just to interrupt you, missions, you mean embassies, right? The embassies or high commissions. High commissions, right. And he got all of them engaged, saying that you will be assessed on your performance on trade, your performance on technology, your performance on tourism. Okay. And this became the collective energy of the whole ecosystem. And we were at $500 billion in the year 2021. You're right, we achieved 675 in the year 21-22, but I'll just correct you a little bit. In the year 22-23, the year just gone by, a very challenging year, very difficult year. Yeah. The conflict is not over. World's biggest and most developed nations are facing recession. Inflation is very high. Despite that, last year we grew from 675 to 776 billion. Okay. So we've actually, if you see in rupees, we've grown from 38 lakh crores of exports 2 years ago. We have grown to 62 lakh crores in 2 years. Okay. Now just imagine the jobs, the opportunities, what our startups, our young people are getting. Right.
Now, tell me, in this quality control, because exports, one was always, talking about exports, and then you say exports cannot go up because India doesn't have quality control. So where was it on your priority list to see that ye jugaad ka maal nahi karna chahiye to have quality control? I know, aapko yaad hoga, there was a time when you went to the market, you would say कि भैया export quality का माल दिखाना, यहाँ लिखा होता था for export quality. Yeah. And मुझे याद है 2014-15 में, in the first year of government, Prime Minister Modi gave us a mantra, Z, zero effect, zero defect. And he has consistently maintained that India cannot afford to be left behind in the race for good quality. Just like you recognize Switzerland for a watch maybe or chocolates, or you recognize Japan for precision manufacturing, or for zero defect manufacturing, or you recognize, let's say, the whiskies of United Kingdom, the Scotch whiskies or single malts. Every country has focused on creating a brand equity. Okay. And Prime Minister Modi has consistently been guiding us that we should bring out high quality products from India, which are of world standards, internationally accepted standards. We've been aggressively working on it for twin purposes. It's not only about our exports, it's our consumers. Okay. I'm responsible to 140 crore Indians for ensuring that they get a good deal, they get value for money, they get high quality products at affordable prices as Consumer Affairs Minister. So it's the Consumer Affairs Department, based on the demand for high quality products that our consumers have a right to, that is focusing on expanding quality standards. We now have a huge number of standards in goods and services, and we continue to have new standards coming out in the thousands. We have also introduced the concept of quality control orders more aggressively. Okay. There were quality control orders by around 2014. I think we had 110, 120 products which came under quality control. Now we have crossed 400, and the target is to go up to 1,500 products which will have a strict quality control order. And all production in India or all goods sold in India, even if imported, will all have to meet those exacting quality standards so that the people of India get a fair deal and our whole mindset for quality becomes... How do you enforce that? The quality control orders are enforced at every point. So if any imports come in, they're enforced at the customs, at the borders. Within India, we do keep doing quality checks for goods being sold in the market. We pick up samples randomly from shops and get them quality tested. We also ensure that goods that are sold have the mark of BIS, the Bureau of Indian Standards. So Bureau of Indian Standards for all goods which are non-food products, and the FSSAI for all food-related products. These two organizations, we have now centered all the quality control aspects. Earlier, there were many different bodies. Agmark would do something for agricultural products. We've closed that. Okay. All Agmark products have gone to FSSAI. Yeah. Earlier, BIS used to do over 150 food products. Yeah. So market and Didn't know who to stakeholders go are all to. confused. We've now brought it down to only two, BIS and FSSAI. That way, we've wound up all the other organizations. We've reduced the burden on our business persons, made it easier to do business. And we are also been able to enforce effective compliance of quality control orders with that. I'm guessing this is going to come under ease of doing business also, which you talked about, where, people who are manufacturing, they have a single window to go to, and they are not confused as to where to go. On this, India jumped 79 positions from 142 in 2014 to 63rd. You were talking about these regulatory mechanisms that came into force. How do international standards organizations judge that, okay, this is what it means, ease of doing business? Well, there used to be a very established World Bank ranking methodology. And this methodology was more stakeholder feedback related. So they would come, they would assess the processes and government systems to engage with businesses. They would talk to business persons, micro, small, medium and large.
and find out whether people are really experiencing that change. And out of that, they would work out the index. And the index is not an absolute number. Okay. It's a relative index. So you are relative to other countries at 63rd rank today. Right. Unfortunately, in 2019, some irregularities were found in a neighboring nation. Not necessarily a nation which has very transparent systems. So therefore, they tried to game the ranking system, got caught with their hand in their till. And the World Bank decided to discontinue the rankings. Despite that, we have continued to rank our states. We have continued to pursue the path of making it easier to do business. So really, we don't know where we are ranked relative to other countries since the ranking is stopped since 19. But I'm quite confident that if any ranking was to be done now, we would be far better, possibly in the top 50. Are the states competing with each other in this? It's brilliant to see the kind of enthusiasm among states. I do a lot of interaction with states on this subject, on decriminalizing laws, reducing compliance burden, engaging with a national single window system so that business persons or stakeholders have to go to only one website and from there they can get all their approvals in. And I must acknowledge that the states, particularly the young officers in states, are equally enthusiastic. It's a collective effort. The center does drive it. And we are getting probably different types of response from different states. But by and large, every state recognizes that in this competitive world, you've got to be industry friendly, business friendly. Otherwise, investment will go to another state. Correct. Manufacturing sector, let me come to that. Because ever since the Make in India goal has been given by your government to all your state governments, to all your ministers, to the manufacturing industry, and the world is looking at India when it comes to, the supply chain factor. What are the challenges that you faced initially when you took over? What did people come and tell you? And how much have you resolved as far as that is concerned? Well, I think ANI is also a brand ambassador for Make in India. Make in India. We are our very own news agency. And I think you've beaten all other foreign agencies in your work in terms of scale, in terms of depth of coverage. And that is the true strength of India. The 140 crore Indians, particularly our youth, and we are a very youthful country. The kind of new ideas they come up with, the kind of innovations they come up with, there's so much potential in India. Sadly, we were always running after the West. We were always running after the developed countries. Yeah. The good part is that has stopped. Now we are looking at indigenous solutions to the multifarious problems the world has. On sustainability, on high quality. Everywhere we are finding our youth come up with very, very brilliant ideas. You see the Startup India mission, we are the third largest startup ecosystem in the world today. All of that is truly made in India innovative products or developed in India innovative services. Technologies also. And Make in India really is a subject that Prime Minister Modi initiated right up front in 2014. And over the years, he's been our greatest votary. He talks about it at various forums. He encourages us to experiment. He encourages youngsters to be willing to fail and accept that and go in for bigger challenges. And to my mind, Make in India has now caught the fancy of Indians. I find more and more Indian businesses also talking about selling domestic products with pride. I hear a lot of Indian businesses saying that we're going to cut down our import dependency, particularly with countries who are inimical to India's interests, who are not very favorable to India. And I see there's a sense of pride in being Indian. There's a sense of pride in consuming Indian goods and services. I think this is a kind of a movement which is taking rapid strides. The challenges are always going to be where some people will look at the least cost alternative. I think we need to take a lesson or two from countries like Japan or Korea, where you'll find a lot of nationalist spirit. They are willing to pay a few rupees more, but want a domestically produced product. They have a sense of pride, a nationalist spirit that these are our local products made by our local craftsmen or workers. And they also respect the fact that they have to support their own local industry. This can't be mandated by the government. This has to come from within. Okay. And I think gradually I'm
I'm pursuing this agenda. Prime Minister Modi keeps talking about this all the time, that if all of us make it our collective decision, our collective duty to support each other, support Indian produced goods and services, sky's the limit where we can achieve results. So, as I was saying, I've seen you at international forums when people come to you and ask you about the India story, and you very eloquently express, our hopes, aspirations, and where we want to stand vis-a-vis all these things. But I've also covered these kind of summits, in the 2000s, early 2000s, when there was similar kind of curiosity. But at that time, everybody used to say, we want to invest in your companies. We want to produce, we want you to manufacture, we want to bring that products into our country. But you get stuck with red tapeism in your country, stuck with corruption. Are those issues still to discuss? Do you have to still answer those questions? I don't think today people are complaining about what used to traditionally be our shortcomings. There will certainly be issues, there'll certainly be requests, demands, there'll certainly be areas where we can improvise, and we have no qualms about acknowledging that we still have a long way to go. But they can see the massive transformation that's happened in the country in the last 9 years. All people who come to India and engage with us, they recognize the fact that Prime Minister Modi has been able to offer a corruption-free environment. Today, no need for dalals or middlemen or public policy managers to be stationed in Delhi to keep going around the government offices to get your work done. They recognize the amount of digitalization that has happened. All approvals can be sought online. They recognize the fact that infrastructure has seen massive growth and improvement over the last few years. They also recognize that this government is responsive. They are approachable. You don't need a friend to tell me if you want to have a meeting with me. You just send a mail, and I find merit in your request, or I find merit in the potential that you offer. And very often we meet people from villages, we meet people from small towns. We learn a lot from them. We get a lot of feedback from them. So I think the responsiveness of this government, the willingness and the openness with which we are engaging with stakeholders is truly the calling card of the government today. At local level, at state level, some people do complain of problems. I very often talk to my colleagues in the states also, where I request them that, look, you have this backlog of subsidies that you had promised or incentives you have promised an industry, but you haven't paid up, and it's giving your state a bad name and consequently the country a bad name. But I do find people are responsive by and large. So very recently I met an industry minister who first thing he did was start the conversation by saying, I took your point very seriously when you told me about this, and I have sorted out and cleared the subsidy claims that you mentioned. I said, I hope you didn't clear the subsidy claim of the case that I mentioned, because that was just what came to my attention. Obviously, there must be many more. He said, no, we've cleared all. Backlog is all just done for one company. And I was immensely pleased. Okay. Now, politically, we may be at different spectrum. We may be at different ideology or against each other. But I get great satisfaction that when it comes to our national interest, save and except a few cases, by and large, the nation and the people in the country are on the same page. Right. You were mentioning small towns and villages, and we're talking about manufacturing still. So the SMEs, let me get to that part. There are 75 million or 80 million SMEs or something like that in this country. How do you keep track about quality control? How do we ensure that the stuff that is coming from there is quality? Because suppose something is made, like एक कुर्ता बन गया, या फिर बिस्किट का पैकेट बन गया, या पापड़ बन गया, and it is exported, and if the quality is not good, it's not just the product which brings a bad name, it's the made in India label that brings a bad name. I'm not saying that small and medium enterprises have bad quality, but what I'm guessing is that maybe it is not put through the rigors like a bigger manufacturer would. So how does India control that?
Well, that's a very good question. First of all, I must tell you that we are very sensitive to the concerns that the very small people may not be able to adopt these standards overnight. So in most of our quality control orders, we give a transition period. Okay. So the small industry is given a certain amount of time. The micro industry whose turnover is less than 5 crores is given a certain longer period of time. I've also told my department that if you come across through stakeholder consultation and feedback, any difficulty that very small people may have, let's say somebody with a turnover of 20, 30 lakhs or 50 lakhs, then we can even look at even further longer transition period. Or if it's only something which is sold locally, we could even look at exemptions. So we are a very open government, a listening government, and very happy to engage with stakeholders and find solutions. I recently met with the shoes manufacturers, leather or sports shoes. There were some concerns that they had, and they had highlighted that to me. They had highlighted that through the press. I immediately called a meeting and we got all people, traders, manufacturers, big, small, tiny. We got retailers who are doing malls or running shoe stores. And we had a very open, free and frank discussion. Wherever I felt that they had genuine problems, we found solutions to it. Wherever I felt that these are certain things where you'll have to take a little tough stand, we took a tough stand because ultimately, you're right, it's the nation's brand that suffers. Also, I think there's a lot more that needs to be done in terms of awareness, both of our consumers and service providers or goods providers. That's where I think friends like you, podcasts like what we are doing today can play an important role. This awareness, once the consumers have and they start demanding better quality, I'm very confident India's image will change, our thinking will change, we'll start producing good quality products. And I've run industry myself from a very young age. I can assure you, Smitaji, my own experience says quality is cheap. Quality never costs more money. Okay. It doesn't make your product more expensive. Quality helps you reduce wastage. It helps you get a better price more often than not. Helps you capture bigger markets. Helps you grow. And therefore, I think a little more training or let's say engagement with the small people to help them understand the importance of quality is what we are doing right now. So we were talking about shoe manufacturers, and it just suddenly occurred to me to ask you this question, that a major problem, one of the earliest stories I did when I was working for a foreign broadcaster was about the environment issue with regard to shoe manufacturing, when they were dumping all their colored all the waste into the rivers. So that's why I want to come to that aspect, that when you bring in manufacturers, retailers, and exporters, do you even have that environment issue in mind when you bring them? In most conversations with industry, sustainability is an issue today. Okay. I have in the morning today inaugurated a trade fair at Greater Noida, where the textile industry is showcasing their products, fashion accessories are being showcased. And the whole focus of the conversation, both with the industry stakeholders, the products that are on display, and my own engagement over there, was entirely focused around sustainability. Okay. And after my speech, in fact, the chairman of the program and the chairman of the Apparel Exporters Organization actually said that today, wherever we go, the only subject that's under discussion and of deep importance is sustainability. They recognize that important big markets like European Union, UK, US, particularly those with whom we are expanding our trade relations, our free trade agreements, they are very, very conscious of the products that they procure. Indians today have started becoming very conscious of that. You remember when Prime Minister Modi wore the recycled plastic jacket in Parliament? Yeah. I mean, what better brand ambassador than that for India's collective effort to make the world a better place to live in? Yeah. And it created ripples across the world. Of course, juxtapose that to somebody else wearing a Louis Vuitton scarf on the floor of Parliament with a big LV written.
That's the stark difference. But I think that's also India, right? That दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं. दोनों अवश्य चल सकती हैं. हाँ. But the issue was only about we are in parliament. We are showcasing to the country and our countrymen our concern, our deep respect for every citizen of the country. And I think our textile manufacturers certainly would have been happier to see a scarf made in Kashmir or a scarf made in Himachal Pradesh. Yeah, and we are seeing a lot of that, the gamcha and the gamusa being worn by all of you ministers. All of you are wearing that and everybody is commenting on that it's not just a fashion statement, it's a statement on pride in India's textiles. And we are seeing a lot of that. Yeah. There was a time, I don't know if you're aware, the Madras lungi. Madras checks. The checks, but it's actually a lungi whose colors fade or whose colors change. Bleeding colors. That was the USP. But that was not something which India did out of choice. It was a bad quality product once upon a time, which bleeded color and then became a fashion statement. Okay. Now, we don't want to see an India of today which gets respect out of that failure. Yeah. We want to create today our name for products which really are environment friendly. We want to create a name for very high fashion products. We want to create a name for the artistic value that our artisans bring to the table, that our tailors, that our designers bring to the table. I mean, I meet all the NIFT graduates, the National Institute of Fashion Technology. It's a delight to see some of their work. I engage with some of the fashion designers whom I'm trying to encourage to play a little more active role in the training of these budding fashion technologists. And they are supporting me in that. It's wonderful to see that a former dean of Harvard Business School chooses to do his wedding in Udaipur in India, chooses to bring the world's top business leaders and professors coming to India for his daughter's wedding. It's wonderful to see them come to India and shop the lehengas and the saris, not only for themselves, but they have tailors who are taking the measurement and getting clothes for all the guests. Now, this makes you so proud. Yeah. This is showcasing India. This is going to be the ambassadorial effort of our own Indians, our foreign residents also, non-resident Indians who come to India and take back a little bit of India for the rest of the world. When the Prime Minister recently gave that green diamond to Jill Biden as a gift from India, I had so many people calling me, Abhi, ye kya cheez hai? What is green diamond? Is it green in color? But it doesn't look green in the photograph. So there was a little bit of confusion and I was like, what is the PM doing? Because he's from Gujarat. The Surat diamond industry is there. Why would he give a diamond which is a fake diamond? Then Darshana ji tweeted that this has been cut and done, everything in that whole process is from the Surat diamond, cutting edge technology used in doing that. And then I understood that. But what happens when the word will get along, oh, this is what the BJP government is doing, fake diamonds ko bech rahe hain bahar? No, I think you need to understand what a diamond is first. As they say, diamonds are forever. Where does that come from? The diamond actually is created from carbon deposits. So diamonds are not something which are just floating around or come out of the ground. These are products which are developed over thousands of years sometimes from a very small piece of carbon, and further carbon deposits keep adding on that, and a diamond is created. And then that is mined, that's cut and polished, and that's the diamond all of you have been wearing for all these years. Yeah. Lab-grown diamonds are the same thing. Instead of being grown in the womb of the earth, they are being produced in a laboratory. These are lab-grown diamonds, as they call them, LGDs. The same concept. You take a small seed, which is put under a machine, and a lot of heat and carbon is deposited on that, due to which it keeps growing, and it creates the same effect of what is happening under the ground. You're doing it in the laboratory. So it's not a fake diamond. It's not even an artificial diamond. It's truly recreating a diamond. Instead of from the Mother Earth, it's being created in a laboratory. The amount of carbon
that is used, its effect on sustainability or its effect on the environment is significantly lower than the natural diamonds So that they're are mined. ecologically friendly, So they're which you were ecologically talking about. friendly. We use renewable energy, Solar and wind, largely to produce those diamonds. Going forward, the idea is to have completely green diamonds, fully sustainable, only green energy going in to produce these diamonds. And today, India has a great edge against the rest of the world in the larger size lab-grown diamonds, where we almost produce most of it around the world. And look at the advantage. Not only are we now making our own diamonds, which were earlier imported from various countries around the world. Now we can make our own diamonds, and the cutting and polishing jobs continue to remain. Yeah. So and also look at the other aspect. Gradually, this will democratize the ownership and the joy of owning a diamond. I think it'll add value. Yeah. It'll add a lot of people into the diamond owning ecosystem. Yes, true. It's, if you remember, since your textiles, it's what happened was that, do you remember when the weaving industry was facing, in fact, one of the earliest programs that I worked for was something called Wither Textiles, which we produced in 1991, when handloom and power loom. And when power loom came and those saris were being produced on the power loom, it was like those who had handloom said, "Ab to sab log pehne lag jayenge silks. It's going to be so cheap." And so what? You know, those Kanjivaram saris or those saris which only the rich could afford, everybody could thanks to the power loom that came in. Yes and no. I think it's truly revolutionary that everybody got an opportunity to have patolas and Kanjivarams. Yeah. But at the same time, discerning consumers or customers continue to patronize the original hand-woven products. Yeah. Our handicraft and our handloom sector is flourishing. There are large export There's earners. actually a waiting list in some places for a good paithani or a good patola, patan patola. It's quite amazing how it's all started. But anyway, let me get from fashion back to the meat and core. We were talking about the manufacturing sector. So lots of people say that, you know, these industrial complexes which are there in the cities or in the outskirts of the cities, the infrastructure is so poor. Like even, let me just say Gurgaon, if we see just not far from here, the roads, the approach, there are, you know, the sanitation, there's just nothing available. Or we see the Bandra Kurla complex. Why don't we see that? It's shiny new buildings, but the approach will be terrible. So when people come from abroad and they say कि इतना shiny building है पर वो जो road पे फंस जाते हो, वो infrastructure क्यों नहीं है? Why don't these things, city planning and all, go hand in hand with our manufacturing and our industrial sector? Smita ji, I think while ANI has a very wide span across the country, I don't think you have moved out of Delhi quite a bit. I have. Anyway. I'm assuming so because I just told you Bandra Kurla complex. I went there only last week to see the Sound of Music with my family and some friends. It was a pleasure to drive to Bandra Kurla complex. We glided into Bandra Kurla. You must have gone at 2 a.m., sir. Ma'am, it's an evening show. I went right in the middle of the evening. We now have the Bandra Sea Link, on which after we crossed Haji Ali, we were quickly on to Bandra Sea Link. When we came out near the ONGC Chowk, we now have another additional bridge that has come up. You did not have a red batti car. Tell me now. Did you have a red batti car? In Bombay, I used my own. Mumbai, I used my own car. You don't I have don't even use the government car. Okay. So, and even in Delhi for that matter, I use my own personal car. Really? You don't have a red batti wali gaadi? Absolutely no red batti. Nobody putting the... My car is standing right outside. Get somebody to check it out. It's my personal vehicle I bought from wonderful. my own... It's a hybrid. It's environmentally friendly and you used to have an ambassador car also at one point of time. I still remember. We used to have ambassador for many, many years. Yeah. Then the Fiats, then the 118 NEs. Yeah. Then do you remember the Contessa, which came out from the ambassador's table? I've seen you in at least 3 Maruti, types of cars. Yeah, yes. Then the different versions of both. All types of cars. Yeah. But right now I'm on hybrid cars. Hybrid car. Excellent. Ever since 2015 actually. 15 and I had 16. Nitin Gadkari ji in the show and he also came in a hybrid car. So I'm very happy that you've done this. Amazing. I think Prime Minister Modi himself is very conscious that we all need to be messengers of the future.
So let's come back to the infrastructure thing. Yeah, so I think if you go to Bandra Kurla complex now, you go straight from the highway onto a flyover which takes you out at in the middle of Bandra Kurla complex at ICICI or there. Monsoons, there's water in the highways. See, I come from Mumbai. I've lived there all my life for the last 6 decades. And there's not something that's happening today. Mumbai has 3 or 4 spurts of rain in every season. And during those 3 or 4 spurts, if that at the time of high rain, the high tide is also there, the combination of that is lethal. You can't do anything about it. Whatever one young person may suddenly say and blame the Mumbai corporation, which I think is very ridiculous, because that party, his party, used to run the Mumbai Municipal Corporation for decades. The fact of the matter is, in the high tide, Mumbai has several low-lying areas. Yeah. The evacuation of water becomes impossible, because if you are evacuating water, it has to have an outlet somewhere. And the Mithi River, which is coming in, the Arabian Sea, all are on high tide. Yeah. The evacuation of water just doesn't have an outlet. So it's something which will need to have a more technological solution, something which will have to be assessed, and maybe we'll have to spend billions of dollars to find an outlet on some other part of the landmass, which is not easy given the high volume of water, the size of Mumbai, and the fact that we are an island city. All 3 sides we have water. Yeah, but sir, isme kya hota hai that there are many people, like what you said, that this has always happened, and it's an endemic problem because of the way the city is, the formation of the city. But then the expectation from your party is always that ki ye nahi karenge to aur kaun karenge. Very true, and which is why you'll see the amount of infrastructure that's coming up. Look at the number of metro lines that have come up all across the country, particularly in Mumbai. Come and have a look at the coastal road. It's a marvel. It's an engineering delight. There used to be talk of a trans-harbour link connecting Mumbai, the island city, to the mainland. We have been hearing about the trans-harbour link for at least 30 years, connecting the Indian Mumbai island city to the mainland. And this has transformational impact on the future of Mumbai and will open up the mainland for expansion and growth, something which Mumbai is starved of, being an island city. It took Prime Minister Narendra Modi's government to come in. It took Devendra Fadnavis, our then Honorable Chief Minister, to take bold decisions. And voila, today it's a reality. Yeah. It's nearly complete, and in the next few months will be inaugurated, I hope, at the hands of the Honorable Prime Minister. Right. It's going to completely revolutionize the Mumbai story, the Mumbai growth story. So look at the coastal road connecting us through a tunnel to Marine Drive. You go to the eastern side from Nariman Point, and from there get onto the Trans-Harbour Link. So effectively, a journey from, let's say, Juhu or Andheri to Pune, which at one point of time would take 5 or 6 hours. When Nitin Gadkari was the PWD minister, he brought the Mumbai-Pune Expressway, which cut it down significantly, but still had the problem of access on both sides, the Mumbai to Panvel stretch and there the Pimpri to Pune stretch. But now, with PM Gati Shakti in play, a novel initiative of Prime Minister Modi, we are looking at end-to-end connectivity in whatever project we do. So now we will be able to, let's say, from Andheri, go up to Pune in under 1.5 hours or 2 hours. Okay. That is going to be the transformation of India. Right. I don't know if you've been to the Delhi-Mumbai Expressway at all. Yes, I have. My God, I went to Alwar the other day in 2 hours. Yes. Something which would take 4 or 5 hours. I've done it earlier. till Jaipur and it was fabulous. Yes. And Jaipur, the last stretch is still not done. Yeah, it's not done. Then the Delhi-Gurgaon stretch is still not completed. It takes 3 hours from Jaipur to Gurgaon and then 3 hours from Gurgaon to India Gate. Pardon me, I've also done that. It's not 3 hours on the last stretch. But having said that, that is also being expanded. Yeah. And the idea is that you'll do Jaipur in about 2.5 hours. You'll do Mumbai from Delhi in under 12 hours, possibly even 10. And now let me give you the dimension, the deep thinking that Prime Minister Modi brings to the table. Though roads don't come under you, but road sports industry. Unless you have those two,
your mantralaya can't function either. So that's why I am coming to you, because in case my viewers say, "Aap Piyush ji ko kyun mat pe dal rahe hain on this?" But No. that's the reason I'm asking you. No, Smita ji, bear in mind that it's everybody's effort. Everybody's pitching in to Yeah. get outcomes. True. And frankly, it's not 2 or 3 ministries, it's all of us collectively. The whole of the government which is impacting the India story. Yeah. I mean, Dr. Jaishankar, who was on your show earlier, with his remarkable work under PM's guidance on our international engagement, is truly phenomenal. Without that, I couldn't have done this kind of exports. It's a collective effort of everybody. If Purushottam Rupalaji's animal husbandry department hadn't given enough support, I couldn't have grown in export of fish products or meat and other products to such great extent. If agriculture hadn't done such wonderful work, we couldn't have got such massive agricultural exports from India. Our annadatas wouldn't have made us self-sufficient. We would have still been an import-dependent economy on food grains. So I think everybody is collectively pitching in. Our tourism minister, our railway minister, our culture minister, you name the department, skill development, education. Yeah. There's not a single element of government which cannot collectively have transformational impact on society. Since you mentioned external affairs, let me get to the dragon in the room, elephant in the room, China. The trade deficit has crossed over $100 billion. Imports from China have declined, but it's still at 22%. So for most people, it's a little confusing. Is China a competitor? Is it a rival? Is it an enemy? What is it? Well, we are all working on a World Trade Organization open government, open trading systems order. And goods and services are coming in from all over the world. Very often we are told you should not look back to what happened 10 years ago. You've been in government 9 years and all. But I would like to point out to you that those who do not listen to the lessons or learn from the lessons of history do so at their own peril. And look back at our history. Way back in 2004, when Mr. Vajpayee was the Prime Minister, India's trade deficit with China was just about $1 billion or $1.5 billion dollars. From that, in 10 years, under the UPA government, it grew 3,300%. 33 times the trade deficit grew. Now, the UPA, I don't know what agreements the Shehzada did with the Communist Party of China. I don't know why they killed our domestic manufacturing in so many sectors. They killed the watch sector, they killed all consumer products, but encouraged more and more free exports from China to come in. In fact, they even kept reducing import duties, which became a great opportunity for China to wedge their way into the Indian market, very often with substandard products, very often at large-scale manufacturing that they do in China. They could beat Indian manufacturers hollow, and they did predatory pricing. Imagine now, 9 years later, we've been, despite the economy growing so significantly, after all, ultimately the demand for goods and services will grow with the size of the economy. The fact that our Indian consumers want services or want goods, they will look for opportunity wherever they can from India, and wherever India cannot feed their requirement, they will look for opportunities from outside the country. So China has benefited from that. So much so that there were areas which we should have focused on many years ago, which was not done in previous governments. Prime Minister Modi in the last few years has been focused on making India a stronger player, particularly look at the PLI schemes, production linked incentive schemes. We are looking at sectorally where we need to expand Indian manufacturing and replace China. At scale. It's not about replacing China. It's more about ensuring resilient supply chains, wherever possible, becoming dependent only on India, or ensuring self-sufficiency, so that the lessons we learned from COVID, again lessons from history, are not repeated in the future, that we are starved of goods which we don't have sufficient supplies of in India. So tell me, sometimes it's confusing for people. Is it Vasudeva Kutumbakam? Is it makes India self-reliant? Where do they come into conflict at all? Do we see
Kutumbakam only to help and to push our products, or do we see that interdependency? And what about Vishwaguru? I want to come to that too, because you had said that we think like a Vishwaguru, we are already thinking like a developed nation. So isn't it presumptuous for a developing nation to already say that hum Vishwaguru hain? Smita ji, all three coexist. Vasudhaiv Kutumbakam is at the core of our philosophy. The world is one family. We believe that we have to be respectful of the rest of humanity, of the rest of the world. We believe in friendly relations. India has never had an expansionist approach. Right. India has always been friendly with everybody. We always tried to find solutions through dialogue, diplomacy. We've never gone to war as an aggressor. In that spirit, Atmanirbhar Bharat, or being vocal for local, is also about a certain amount of confidence in our own manufacturing, our own skills, our own ability to meet the needs of Indians, because that is where we give jobs to our young boys and girls. That is where Indian opportunities of investment, trade, all of those come in. But when we talk of self-reliance, we are not closing India's doors to international engagement. If you at all ask me, I think we are opening them wider. Okay. I believe in the Michael Porter theory that every country or every economy will have certain strengths. The competitive or comparative advantage that different countries or different economies bring to the table will determine who will rule the roost in different products. Of course, there will be certain strategic sectors where you may not be the most competitive, but you will still want to be self-reliant. Though that's more a strategic call you take. Okay. But otherwise, we have to encourage Indian domestic manufacturing. We must try and create high quality goods at scale so that we are not overtly dependent on the rest of the world. But at the same time, the consumer demands affordability, the consumer demands good products at the best price. And if there is an area where it's better to import, where economies of scale within India don't justify it, or where somebody has a technologically higher competitive edge, then we'll have to bring those goods from abroad. And that is the spirit which has helped countries become developed nations. No country in the world has become a developed nation without first having the mindset that we want to be a developed nation, which Prime Minister Modi has, in his Independence Day address, tried to inculcate in 140 crore Indians. Right. And that mindset of quality, that mindset that I have the potential to become a Vishwaguru, that mindset is the first requirement. The second is capabilities. And we have managerial skills. We have our young boys and girls coming up with huge amount of talent. So we have that requisite also. We have a large number of natural resources which can make us self-sufficient. But then there are certain areas where we've not yet got the technological edge, and we'll continue to import. Right. So if today somebody says that, no, why are we importing aircrafts? That will be quite silly. Because we don't make aircrafts in India of the commercial size and scale and quality that are made in France or in America. So orders are being placed on them. So different countries will have a competitive edge or a quality edge or a technological edge, which we should leverage. Free trade agreements or economic partnerships are about having open economies, are about competing fairly, and about giving opportunities to both the Indian businesses or Indian people and people in the other parts of the world to compete for the consumer to get the best product at the best price. Right. Let me make it shift a little political, but still with your portfolios. On the one hand, there is the Make in India, there is the Vishwaguru, and you are a part of there was also the India shining bit of your political party. On the other hand, what we are seeing now is the Congress party saying that here is this party which is pompous by nature, which talks about conquering the world, which talks about being so big, but where a large part of the country doesn't have the basics. So the whole thing about giving freebies comes in, which the Prime Minister said, Revdi culture, your party colleagues have said it, you have said it, that freebies is not the solution to it. But politically, it's having a negative effect. Now that these 4 elections are coming in,
Will your party also go in for revdies distributing freebies? You know, yesterday I was engaging with ex-servicemen of a very high level, generals, major generals, commanders and stuff like that, in Jaipur as a part of our outreach to engage with stakeholders, with the people of India about completing 9 years in government and thanking the people of India for giving Prime Minister Narendra Modi and his team and our party an opportunity to serve them 2 consecutive terms with an absolute majority so we could give a strong, decisive, outcome-oriented government. Very interestingly, one of the very senior retired armed forces personnel in his comments made this comment that just because Ashok Gehlot is offering a gas cylinder at 500 rupees or some people are offering these freebies, please don't go down that path. He was advising me. He said it will be counterproductive. The people of India are smart. They understand what's good for them. They don't want to be a Sri Lanka or a Pakistan. They don't want to be a Bhandara Republic. They don't want to be like one of those 70-odd countries which are today facing stress. They recognize that Prime Minister Modi has made India from a fragile 5 economy 10 years ago to the world's 5th largest economy. And very soon to be amongst the top 3 countries, top 3 economies in the world, maybe in the next 4 or 5 years. He asked me to ensure that we stay our path and keep empowering the people of India. Keep empowering them so that their basic needs are taken care of. And build an aspirational India which aspires for the good things of life, which spurs our young population to work even harder, earn money and get the good things of life for them and their families. And that's exactly what the Prime Minister has been focused on. You talked about India shining. Prime Minister Vajpayee only got a very short period. And bear in mind, he was also running a coalition government. So there were limitations to his ability to maneuver economic policy or to maneuver the mindset of the nation to empower people and to move in the direction that we have been able to do. Prime Minister Narendra Modi, and we are grateful to the people of India, and through you I would like to truly express the gratitude of all of us in the BJP to 140 crore Indians for the trust and confidence they have reposed in us, for the blessings they have given to the Bharatiya Janata Party again and again, particularly the absolute majority, because of which we could actually bring about a transformational change in the lives of our people. After all, tell me, could you give me any justification that for nearly 7 decades after independence, we had half our country's population who didn't have a toilet and had to go to the fields? Can you explain to me that 8 or 9 crore children, 3.5 crore families did not have electricity in their home? And for years, nobody did anything about it. Yeah. How can you justify that water? And most doctors tell us that that's the biggest cause of disease. Only 3 crore families in the country had water from a tap, Nal Se Jal, till 2014. And in a short period, we've increased it to 12 crore. Another 2.5 years from now, every home in the country will have water from their tap. Now, Nal Se Jal, the Jal Jeevan mission, has a transformational impact potential on the health and the lives of our people. Which many don't realize what it means. Some of us lead such insulated lives. We don't realize that unless water comes... I'll tell you one anecdotal experience. I had gone to cover the election in one place and I said, yahan se to nahi jeet sakte. BJP is not going to, because traditionally they have voted for the Congress. For generations they voted, so there's a muscle memory kind of a thing. When they go to vote, they will automatically vote. But it was later that I realized that no, they are voting for the BJP, and simply because of the gas connection that came in. And something that we take for granted, what bothers us in the cities, that you had a waiting list for a gas cylinder maybe, that you had to buy it in black, but it was available. But for those people, for them to get a gas connection and to get gas in the house,
and the youth was voting. So I was like, why would a young man vote? उसको तो क्या फर्क पड़ता है कि गैस है कि नहीं घर में, पानी आया कि नहीं, because it's the woman who does it. स्मिता जी, मैं एक करेक्ट कर It matters. एक छोटा सा करेक्ट कर दूं. शॉर्टेज भी रहती थी सिलेंडर्स की. अगर आप याद करो Yeah. तो आप या मेरे घर में हम 2 सिलेंडर रखा करते थे कि एक खत्म होगा, दूसरे को भरोसा नहीं है क्योंकि रजिस्टर करना पड़ता था लाइन में कब आएगा वो, तो दूसरा सिलेंडर यूज करते. अब ऐसे समृद्ध परिवारों को तो ये सुविधा मिलेगी. गरीबों की किसने चिंता की थी आज तक? तो मैं सोचती कि why would a young chap, because you know it was the responsibility of the woman कि वो she would get the firewood and I'll tell you why the young man. आपको पैडमैन पिक्चर याद है? पैडमैन में मुर्गन की स्टोरी एक तरीके से तमिलनाडु के युवा की. पैडमैन में आदमी को पीड़ा थी कि मेरी पत्नी को सैनिटरी पैड नहीं मिल पा रहा. It's the same thing. Doctors tell me that cervical cancer in women is largely because of these two problems, toilet and sanitary pads. So, Pradhan Mantri Narendra Modi ji, coming from a very humble background and very conscious of his responsibilities to the poor of this country, the less privileged, the marginalized sections, the persons who have been discriminated for so many years, has brought sanitary pads in the country available at 1 rupee each, without a government subsidy. They are being sold at the Jan Aushadhi stores, so that a poor lady can get for 100 rupees in a whole year security from this the diseases need. that come with not having that. I think the men also recognize that how indignified it was for somebody to go to the fields for toilet. And you know, the thing is that they, one or two whom I spoke to, they said their grandmothers died because of cancer, because of the chula, you know, the thing. And then the sarpanch told me that there were girls who were raped when they went to to the forest. Rajasthan mein dekhiye aaj ke din kitni problems hai. There's no. So that Labharti people don't realize that how these small things benefit. Anyway, let me get back to what you were saying. Let me give you a small experience I had only 10 days back, because it has touched a chord in my life and in my heart and mind both. I'd gone to Alwar and Rajasthan, met the local people there. I tell you, when you go to the rural areas, you meet the villagers, you meet the farmers, they share their own experiences. They tell you how important, how impactful that 2,000 rupees coming into their bank account without paying a bribe every 4 months so that they get 6,000 a year can be when they really need that little bit of money to buy seeds and sow their fields. How critical that money can be when they really need to maybe hire a tractor to harvest their field. Now, small things like this is what has built the trust that the common man in India has for Prime Minister Modi. Right. Today, you go to any part of the country, the basic needs are taken care of. You know, everybody, 4 crore homes. Imagine 4 crore homes being built, particularly in the rural areas more so. Just in Rajasthan alone, will you believe 19 lakh poor families have got a free home, only in Rajasthan alone. Now, 19 lakh is almost 1 crore of people. That's 1/8 the population of Rajasthan, 1/10 the population of Rajasthan. They've got a home, a new life. वो परिवार लखपति बन गए. It's transformational. I went to a village Gram Panchayat called Kathwadi. It's about an hour's drive from Jaipur, hour and a half's drive from Jaipur. It's an Adivasi area. And I was walking around the village and I went to a Adivasi home. The lady met me there with her children, and then her husband also came after some time. The lady is a worker in some projects, mazduri karti hai. Her husband is a divyang, physically challenged person. She had 8 girls, the eldest of whom had done an M.Ed because of the scholarship that the government sends into her bank account directly or the facilities that they receive. She had a new Pradhan Mantri Awas Yojana home. She said, I asked her,
repeatedly, did you have to do anything? Did you have to put some influence? Did you have to pay anybody anything? Said no. The local panchayat, and she pointed out to the sarpanch, is a very nice man. He identified. They had 144 families in only one gram panchayat. 144 and Adivasi families who've received a free home. The lady I met took me to her home, made me sit on her bed. There were 2 rooms. There was a toilet. So she told me, आइए अंदर आइए. So I started taking off my shoes. She said, नहीं आप ला सकते हो. I said, नहीं मैं निकालूंगा. Took off my shoes, went in. There was a gas cylinder और गैस पे चाय बन रही थी. और स्मिता जी, I can't tell you, it's probably the most tasty, most delicious chai I've had in my life. Okay, I can imagine. जिस प्यार से उसकी बेटी ने मुझे कुल्हड़ में वो चाय पिलाई. Very moving experience. Huh? It's unbelievable. There was a toilet adjacent to the home. They make it a little away, you know. It's a traditional Indian thing and actually quite hygienic. Okay. There was a toilet there. My toilet goodness, के बाहर. you're tearing up while you're speaking about it. Toilet के बाहर wash basin था. It was just a beautiful experience. And there was a tin shed right outside. They showed me कि हम पहले वहाँ रहते थे. I tell you, 11 लोगों का परिवार, 8 लड़कियां, 1 लड़का, पति पत्नी, 11 लोग उस टिन शेड में खड़े भी हों तो एक साथ नहीं खड़े हो सकते. You feel at that time that this is the real matlab of your work. It's the real meaning. You feel that? It's enough. It's the satisfaction that you get. It's the trust and affection and love that you get from all of them when you engage with them. The most important thing in life. You've been a VC, so you know balance sheet एक तरफ होता है satisfaction देने का और दूसरी तरफ ये है चाय पीने का in a tribal home which has like seen nothing. How will you compare the two? This far exceeds anything you can do in the corporate world. In fact, today I'm finding a lot of people who've done reasonably well in life. They want to come give back to society. I have a friend in Mumbai, also with a similar background like me, from the private equity or investing world, who's dedicated nearly 90% of his income, committed it to, and he's not a very rich man. He's not a Tata Birla or any of that. Middle class like any of us, who has committed 90% of his income happily. Both he, his wife, his daughter are in it together. Husband and wife spend all their time in working on different projects. They're working with the Maharashtra government in desilting of the ponds and lakes, so that the farmers get better water, more water. Amazing. The groundwater improves. He's doing that in Jharkhand. He's done that in Uttar Pradesh. He's just committed his whole life. And I'm seeing so many more people. I have a very distinguished Supreme Court lawyer, Mr. Lakshmi Kumaran. On one of the VCs during COVID, I made an appeal that I said, look, all of you on this VC have done so well in life. Why don't some of you also give back to the nation? Why don't you leave it to your children or leave it to your firms to run and you start offering your services to the government? And lo and behold, instead of my pursuing him, this eminent lawyer, he started pursuing me. मुझे 2 हफ्ते लग गए टाइम कैलेंडर में मैच करने के लिए. Finally घर पे बुला के मैंने उनसे बात की. His enthusiasm was just remarkable. Fantastic. And today, without charging a single rupee, he's with us in every FTA negotiations. He's giving a different perspective than the typical government thinking. He's engaging with me when I'm engaging with stakeholders, almost like a government employee, pro bono. And has become an integral part of our WTO negotiations. We've recently, Honorable Prime Minister Narendra Modi and President Joe Biden have agreed to square off 6 WTO disputes during this historic state visit. Yeah. Now, this is the first time it's happened in the world. People are awestruck. They're amazed that the US and India, traditional litigants at WTO, some cases are decades old, have managed to sort out 6 cases at one shot. Mutual understanding and mutual benefit of both countries, right, which will give us a greater ability to export products, articles made of steel,
or aluminium without any significant or actually no loss. Because against that, all we had to do was remove some additional duties, which were not hurting any farmer in India in any case. Okay. So we already had a duty to protect the farmers. We had imposed some additional duties because they had imposed duties on our steel and aluminium. So we both mutually agreed we'll remove the additional duty on To find a some of the common products, purpose, right? And you give us exclusion from your additional duties for our steel and aluminium. We have equally both benefited, and for both of us the cost is zero. Okay. That's the spirit what Prime Minister Modi often says, that dialogue and diplomacy are the solutions for all the problems of the world. And he has actually implemented it In this visit. Okay. 6 trade disputes. It's created a furor. I have a message on my phone from Ngozi, the Director General of World Trade Organization. She's actually shocked. She wants to discuss with me, ask time for a VC. She said, I want to understand how you achieve Yeah, this. the mechanisms of it would be, something like a prototype then. She says, the WTO appeal mechanism is kind of collapsed. And so all disputes are stuck. So she says, we are hoping that this US-India resolution of 6 very important disputes bilaterally can help us set a template to find an alternate dispute mechanism in the WTO. Amazing. So India today is showing the world How to the do way it. forward. So now let's come to a little bit of the political stuff. Before I get into your role as leader of the House in the Rajya Sabha, let me ask this one question. You were mentioning Vajpayee ji. You're one of those rare BJP politicians who have seen the Vajpayee Advani era, and as a child you see it even before that, and then you came into active politics, I would say, during the Vajpayee Advani era, and now you're in the Modi era. How do you see that transition? What is it like to be part of the team? As a child, your mother was also in active politics, in the legislature. Tell me a little bit about that. First, let me correct one very basic, important issue. I did not come into active politics during the Vajpayee Advani era. On the contrary, during that period, I was absolutely out. I'd taken a sabbatical. So I got involved way back in the 80s when I was still in my teens. Really doing work of sticking posters at night or supervising banners being set up or organizing the chairs in a public meeting, and all that. You run around like a mouse helping the organizers and stuff like that. एंड एक कार्यकर्ता की भूमिका में बचपन से ही हमारे यहाँ पे काम करने का मुझे सौभाग्य मिला. I was then fortunate in 89 to get a chance to work for Advani ji in New Delhi when he fought his first Lok Sabha election, or his first election actually. And it was a enjoyable, very, very game-changing experience. He actually handpicked me from Mumbai and said, Piyush, aake yahan pe kaam karo. I stayed with him in his home for 4 or 5 months. So I've had the privilege and fortune of learning all through my childhood. But then I started expanding my business and industry, got more and more involved in that, then got into investment banking. So during that period, I had taken a short sabbatical also, particularly during the Vajpayee government years. I would off and on give ideas. I would come up with some thoughts or ideas which always play up in my mind on infrastructure or on... At that time, even the SEZ story, I built up a note. Though you're saying you were not part of it and you were sabbatical, if I may just interject out here, the first time that I saw you and Advani ji told me he's a bright spark. That's what he had said. Because yes, that was, I swear to God, it happened when I didn't know who you were. And I was sitting with him and taking down notes. And then you came inside and you spoke with him something. And then you left and I said, kaun the? Because I thought you were part of the RSS when you came inside. But you were not dressed like the other RSS No, I'm very people. much a part of RSS. Yeah, but I didn't know. Record. I didn't know who you were. So at that time, he said he's a bright spark. He's part of somebody that I know, and then he just didn't say anything. And then, of course, I got I might to know. have gone to his home more like a family member. Right.
So Because we've then he grown up, told his me, children yeah. and I have grown up from childhood literally. And he told me together. about your mother Pratibha and is all like that. my sister, Yeah. Jayant is my brother. So we've grown up from childhood. So there's a lot of huge respect for him and for Vajpayee ji and all. I might have been there either only as a part of family, or I can tell you I could have been there possibly editing My Country, My Life, the book the that he book. wrote. Yes. So I used to sit long hours at his home and proofread the final version that was coming out. So those are personal. And you knew Vajpayee ji involvements. also very well. Vajpayee ji used to stay at my home ever since my childhood. So probably even before I was born. So I had the fortune of learning from all of them what dedication to the nation is about, what the nationalist spirit is all about, the thinking of the RSS and the ideology of the Bharatiya Jansangh. So from that time, I was really very lucky that I got an opportunity to learn and understand public life and public service from them. But at the same time, my parents were very clear that you have to A, get good quality education, B, earn your spurs, earn your money to be self-sufficient, and C, in politics, you're not going to get any special privileges because you're our children. So when my mother's elections, for example, would come up, and she was a member of Maharashtra's Legislative Assembly, yeah. before that a corporator in BMC, then MLA, for 3 terms she was an MLA, and she didn't lose. She chose not to contest, saying that now give younger people a chance. She had crossed 63, 64, and she said, give younger people a chance, and now I'll continue to do social work. For that matter, she was never a politician. She was just a social worker in that area. And for her every election, I would work day and night in the constituency, handling various things, but always as a karyakarta. You're not allowed to throw your weight around. None of that. The hierarchies were all set. The people in charge were in charge. And we would work like karyakartas. My whole family would work for her. You've election. known Maharashtra politics for so long because, you're a second generation politician from Maharashtra. Why is it Maharashtra politics is in such a total mess right now? One of the reasons for that is that politicians are seeking to thrust their children as leaders, many of whom may not really either be competent or not seen enough of life to be able to have that sensitivity that a good politician should have. Now look at the Maharashtra landscape. You have NCP, where there's a fight within the family, whether the daughter becomes the heiress, or a nephew. They already had that fight once before in the family. It's continuing. You have the Shiv Sena, which first had a fight in the second generation, where Uddhav Thackeray was suddenly chosen out of the blues, whereas Raj Thackeray seemed to be the natural heir with all the flair and the oratorial skills inherited from Bal Thackeray ji. But he chose as they say, blood is thinner than water. He wanted his own son. Now we're seeing that play out in the third generation, because of which today he's out of the Shiv Sena totally, because he chose against very senior leaders like Eknath Shinde ji. He chose to give prominence to his own son. So finally the Shiv Sena decided to go along with Eknath Shinde because he embodied the true spirit of Balasaheb Thackeray, and that's how the Shiv Sena had to reorient itself. If you look at the Congress, the entire party is full of family-run dynasties. And those family-run dynasties don't emerge out of struggle or hard work. They are foisted. I started, let's say, my first election, if I remember correctly, was Jayanti Ben Mehta's election for Parliament in 1984. And until 2007 or 8, my mother retired in 2004. My father passed away in 2008. Until that time, I had worked in every national election or whatever as a karyakarta. But I was holding a very small office, probably as secretary or treasurer of Bombay BJP. That was where I had reached.
it was only after my mother retired and my father had passed away. Destiny brought me to Delhi in 2010, a full 26 years after I first got into working for the party. So this is a party which totally believes in merit. This is a party which by and large ensures that कार्यकर्ता का सम्मान हो, कार्यकर्ता को प्राथमिकता मिले. The preeminent position is of the worker. You remember Atal Bihari Vajpayee ji saying, कि positions may come and go, but nobody can take away my title of a BJP worker. That is my strength. In a way, he was reflecting the fact that this is a cadre-driven party. And I'm so happy that my parents gave me good education. My parents gave all of us, all our children, good education. They made sure that we all stand on our own feet as independent financially as we can be, because of which we have all been able to give our children good education. All the siblings in the family have been able to give good education to the next generation. University. So I think it's important that political families, instead of treating their parties as fiefdoms or as their right, dynastic right, should start respecting actual activists who can do good for the country. So you were at no point of time did you think that you're a Shehzada, which you mentioned about? I'm very, very confident, and I'm very clear that I have come up here post, as I say, my father passing away, my mother retiring from public life, and total retirement. She's been absolutely in oblivion from 4 to 20 when she passed away. For 16 years, only a social worker. She would run her old women's home, small one, Navi Mumbai. So you worked your way up. That's the strength of the BJP. My next question is going to be about the Delhi Ordinance Bill. Before I ask you about this, here's a short primer. For viewers and listeners who do not know, Mr. Goyal is the leader of the House in the Rajya Sabha, where the BJP-led NDA has the support of 109 MPs out of a strength of 238. The Congress is the largest opposition party in the upper house with 31 members of parliament. The BJP government in the centre brought an ordinance on May 19th to curtail the powers of Delhi's elected government. That ordinance is going to be introduced soon in the upper house or the Rajya Sabha. The Aam Aadmi Party, which is in power in Delhi, is lobbying hard to defeat the bill. But that is going to be impossible without the support of the Congress, which is loath to support the Aam Aadmi Party. Will the Congress side with the BJP and aid it in passing the bill? Which is the bigger enemy for the Congress, the BJP or the AAP? That was the primer. So let's ask the man in the hot seat. Piyushji, what's going to happen with the Delhi Ordinance Bill? It'll be passed in the parliament. They don't have the numbers. Says who? Your party doesn't have the numbers. Well, what is good for the country will always have the numbers. Without the Congress? Or with the Congress? Or without the Congress also we have the numbers. So it's going to pass in the Rajya Sabha. You're 100% certain about that? There was a time, we have a small group of friends back home in Mumbai, you know, my daughter's class fellows' parents. And in some sense, they are my closest friends because they tell me the truth. They give me a lot of feedback when I get back there. I can, as they say, kill ke has sakta hun unke saath. And we still go Dutch. Okay. All of us still go Dutch. So it looks quite funny. You know, you're in a fancy restaurant, everybody starts looking at you. Everybody taking out their wallet or taking out their cards and giving 6 cards to the guy to split it 6 ways and stuff like that. But anyway, in that group, one joke used to be that whenever there was something my wife was very sure of, she would say 110%. Okay. So that's what I'll use today. 110%. Right. But how do you manage these different opinions? I'll tell you honestly, when I asked Priyanka Chaturvedi was one of the earliest persons who came to the podcast, and I asked her, and I said, you know, you're in the Rajya Sabha. Rajya Sabha was when we were children, and when we used direct telecast was allowed of the speeches. This was a house of elders. You expected intellectual arguments. But Rajya Sabha has now become
such an embarrassment. People jumping on tables, pulling each other, throwing things at each other. You don't expect a house of elders to do this. As leader of the house, tell me, how can you improve the level of discourse which comes out of the Rajya Sabha? No, it's truly a matter of deep concern that we've not been able to really reflect the aspirations of the people of India. We've not been able to have mature debate and dialogue and discussion in both houses of parliament today, and even most sadly in the upper house. Matter of reflection for all political parties. Prime Minister Narendra Modi himself is very concerned at the level of discourse that the Congress particularly and the other parties have brought to. The scenes that were made by some of the Aam Aadmi Party members of parliament, the scenes that the Trinamool Congress MPs have done in the well of the house, on the floor of the house, are certainly matters that concerns the whole nation. But I believe ये जनता है जो सब समझती है, जानती है. And the more they do this, the people of India who are watching, who are realizing how their aspirations, on the one hand, we have a leader who's working 24/7 to meet the aspirations of the common man. And on the other hand, we have a set of senior politicians, the House of Elders, where disruption has become the order of the day rather than mature debate. And frivolous issues which don't stand on merit, issues which are not on the agenda of the or listed agenda of the day, issues which are extraneous to the subject at hand are sought to be foisted on the house, and an approach of my way or the highway is sought to be articulated by many senior Congress and other opposition leaders. Matter of deep concerns, and the entire nation is watching. I think the nation will give them a befitting reply on this. But, the opposition turns around and they've been saying this for over a year and a half, that they're being muzzled in the house, that their voice is not heard at all. The mics are switched off. The TV cameras don't focus on them. And there is no debate, and it's not their fault. It's your fault because you are the ones who are in the treasury benches. First of all, the mics cannot go off. The mics are determined by the chair, by the speaker or the honorable chairman. And no mic goes off for anybody, but there's a time limit. And there's a relevance of the subject that is being discussed. It's an absolute travesty of the truth to suggest that the mics are switched off for the opposition members. They're switched off for me also. They're switched off for a ruling party member. If let's say we have a 3-minute mention to do, we are allowed 3 minutes, it automatically switches off. That's the only time it gets switched off. Other than that, I think it's a very fairly run, very equitably run house. The chair admonishes anybody who doesn't behave properly, which is rightfully so. The chair admonishes somebody who may not be giving an appropriate answer or using appropriate language. Again, they are mandated to do so. As far as the cameras are concerned, I think they should be thanking whoever is the cameraman. I don't know. We have no clue. That's an independent organization. But I think the opposition should be thanking that person for saving them the ignominy or the insult that the world will see in terms of their misbehavior and childish antics that we sometimes see coming out of the opposition. But the world opinion, when I say the world opinion, I mean the media and to some extent even politicians now in the world. You've seen what Barack Obama said, when during the Prime Minister's visit, when the Prime Minister was in the US, he commented on it. And where do they get the narrative from? They get the narrative from the op-eds and from the reporting that happens in the foreign media and the reporting which is happening in certain sections of the Indian media. That reporting is of what the opposition says is that the parliament is muzzled, the institutions have been misused, the media is muzzled. So what do you have to say to that? If you were muzzled, you wouldn't be asking me this question in the very first place. So I think the very fact that this is a democracy, everybody has freedom of speech, everybody is out on the streets whenever they want to raise an objection, or you have dharnas at Jantar Mantar all the time.
Our senior politicians are on television all the time, are on your ANI programs. You said the first podcast you did was with an opposition leader. Correct, with Jairam. Now, how many more proofs does the world need or anybody in India need? Now, if some people are misguided or some people have some agendas, then I think we need not bother about that. We can't hold a brief for those people. The Honorable Finance Minister gave a very befitting response to some people who may have been misguided, like they have been misguided in the past about other issues. So I think India is a vibrant democracy. Common man sees that, common man experiences that, common man enjoys that freedom of speech and expression. And it's only yesterday that the nation and the world has recounted the dark days of the emergency, which was imposed on 25th June 1975, where freedom of speech, freedom of liberty, freedom of expression, everything was curtailed. The laws of the land were suspended. The then government of the day gave themselves an extended year and a half. Kishore Kumar's songs couldn't be heard on Doordarshan or All India Radio just because he refused to come for some program that the Congress wanted him to come to. The then president of the Congress, Devkant Barua, saying India is Indra and Indra is India. Who muzzled media freedom and press of the people of and the freedom of the people of India? Who muzzled the press? Who muzzled the voice, the dissenting voices that is the very essence of democracy? Who did forced sterilization of our youth? And actually it's one of the worst things that could have happened to the youth. Who dishoused people from the minority community at Jama Masjid? Sadly, many people don't learn from the lessons of history, which is where we started this podcast from. Right. History teaches us to be cautious, to be careful. And I think the behavior of the Congress and some of their colleagues and their party, other parties who are working with them, clearly demonstrates that history and the people of India will never forgive them. In the war of narratives, do you feel that your party has not been able to enforce your narrative, or not enforce is the wrong word, to tell the people that, when you're accused or your party is accused of having an undeclared emergency as compared to a declared emergency, do you feel that you couldn't do enough? We have so much more work to do, so much more action on the ground. Okay. We have to deliver the aspirations of the people of India. These false narratives or this effort to use a Goebbelian theory of keep repeating a falsehood or to try and reflect that there's any problem with the freedoms in India is not being bought by anybody. You yourself corrected yourself about enforcing. If You'd you had rather to have enforce, I would have sent you a questionnaire that please ask me these questions. No, you know that, right? So, exactly. Yeah, Neither will you accept it, nor will won't. I do that ever in my life. Never. Yeah. The BJP believes in complete freedom. Yeah. I think the only thing we request, and I'm repeating, we request from all of you and from all those who are opinion makers and important people in society, influencers, is to speak the truth. True. And the truth will always prevail. This we is believe what I in try Mahatma to Gandhi. tell people, that nobody understands. ये जो scripted interviews की बात चलती है, it doesn't happen. I wish people would understand that. But anyway, the other thing that we pointed out was that that often is talked about is that when your party came to power, one of the things that you used to, or during election campaign, was always said, Congress Mukt Bharat karenge. But 9 years hence, they are winning election after election. They won in Himachal. They won. I'm not even going to list it. सबसे पहले तो ये प्रूव हो गया कि democracy is vibrant in India. ये भी प्रूव हो गया कि EVMs work all right. तो उसके लिए हारने की जरूरत है क्या? हारने की तो जरा भी जरूरत है, और हम कोई चुनाव हारने के लिए नहीं लड़ते हैं. हम तो हर एक चुनाव को पूरी सीरियसनेस से हर लेवल पे लड़ते हैं, और उसकी वजह से देश की जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद भी दिया है, बहुत प्यार भी दिया है, बहुत विश्वास भी रखा है. 2 बार पूर्ण बहुमत, और पहली बार से अधिक बहुमत दूसरी बार, और अब आने वाले चुनाव में उससे भी अधिक बहुमत देगी, ऐसा हमारा विश्वास है लोगों के ऊपर, और लोगों का विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर. बट elections, you don't win all, you win some, you lose some. There could be a variety of reasons. Congress Mukt Bharat is the mindset that the Congress had imposed in this country that we were seeking to remove from India. Obviously,
in this country, we have probably over 2,000 parties, I'm given to understand. In this country, we have parties which are really, one shudders to think that they are even in the political firmament without naming any party. But they all coexist, we all work together. The fact of life is that when we talked about Congress Mukh Bharat, we had to get rid of the mindset that the Congress had foisted on this country. That without the Congress can't... A, that they have a divine right to rule. B, that it's one family which is the only family that matters. Did you ever imagine that nobody wishes to be the president of the Congress party, the grand old party, and nobody wants to take on the president's position because they understand it's a titular position. Everything will be decided by the family. And this kind of family-run politics is certainly not good for the country. The mindset of keeping the nation poor, giving slogans and promises but never implementing them. It is that old mindset, almost like a colonial mindset, that continued in India for so many decades after independence, which Mr. Modi has been successful in gradually getting out of the psyche of the common man. The colonial mindset, or I think forget about the colonial mindset, seems like the socialist mindset is coming back. If you see the meeting that happened in Patna, the socialist element, all the socialist parties reminiscent of probably the 70s getting together in the JP movement, and then post that when the later part where you had all these Janata Party members getting together minus the BJP, when they were all getting together and forming governments. Well, I think enough experience the country has of such coalition governments. We've suffered deeply for the long period that the nation only saw coalition governments, and the country has benefited immensely since Prime Minister Modi got an absolute majority and for the last 9 years has been working with Seva, Sushashan and Garib Kalyan as the very core philosophy of his government. And you can see that in every walk of life. The element of service, the compassion and empathy with which he works. You can experience that giving back to the poorest of the poor is his primary motive. How to improve the lives of the poorest in this country. Antyodaya. And of course, the fact that we brought good governance at the core of the nation's thinking. This is really the USP of this government. And any amount of such unholy alliances or such conglomeration. You remember Atalji's famous dialogue, kahin ki eent, kahin ka roda, Bhanumati ne kumbha joda. This is even worse than that. Because here there's absolutely no common ideology. There's no common philosophy. There couldn't be a common minimum program. Even post that meeting they fought. They still continue to fight on television shows. And Kejriwal ji wasn't there in the... So I think the people of India certainly don't want a hodgepodge like this again. I get that. In fact, there's a lot of talk also. The BJP doesn't like losing elections. That's quite clear. You people have your Chintan Baithak and you sit and you strategize, you do all that. But you've been in power for 9 years. After 9 years, there's this sense of, you almost look like the Congress at times, pardon me for saying this, where you say, acha theek hai, kuch to haar jayenge, koi baat nahi, kuch aur jeet jayenge. There's that sense We've never had I know that you sense. don't like being told this. We've never had that sense. That. I only said that you do sometimes lose an election. But that doesn't mean we don't work equally Whereas hard. the Congress used to be the other way around. Haar gaye, chalo, haar gaye. But now look at them. After all, आप सोचिए Tripura, we had 1% vote share. We ended up forming the government twice with an absolute majority. West Bengal, we were nowhere in the picture. We have 18 members of parliament. And we are now the principal Are you going to work just TMC. as hard in Rajasthan, in Madhya Pradesh, in Chhattisgarh, in Telangana, like you did in Tripura? Or is there going to be a lackadaisical attitude like in Karnataka? जरा भी संदेह नहीं करना चाहिए. We will be there. I mean, of course, right now we are doing a 9-year outreach program. But we will be there like never before to win each of these states. And that's the BJP commitment to the people, because we believe the people of these states deserve better, and we believe that the Bharatiya Janata Party will give good governance, will give a better future for the people of these states, and we want to have an opportunity to serve these states, Madhya Pradesh once more,
Rajasthan get back in after 5 years of a hiatus. Chhattisgarh get back in after 5 years of hiatus. Rid the Telangana people of the massive corruption that KCR and his party and his ministers have foisted on that state, and really give them good governance and a better future for the people of Telangana. I think we are very, very committed. We work equally hard as we do in every election. And to take an analogy, I don't think ANI likes to lose market share, do you? No, we don't. Are you looking at inviting your competition to come in and... So you tell me, are you that's inviting the competition like you did in Karnataka? Because that's the infighting in your party in Karnataka is something that is being reflected even in Madhya Pradesh. So there could be many reasons why we did not win in Karnataka, but I can assure you we are a very, very responsive party. We get into detail, and we also do course correction wherever and whenever called for. I can categorically state on this show today that each of these 4 elections is extremely important, and the BJP is going to win all these 4 elections. You know, the opposition members, when you talk to them, they say, हमको ये इलेक्शन किसी ना किसी तरह जीतना है, क्योंकि अगर बीजेपी वापस आ जाती है 2024 में, फिर तो हम लोग सब खत्म है. और सिर्फ हम लोग ही, they don't mean that individual politicians, they mean political parties will be finished. And then if you argue, they say, अरे आप मीडिया वाले भी खत्म हो जाएंगे, जुडिशरी खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट खत्म हो जाएगा, दूरदर्शन खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा. बहुत दुर्भाग्य है कि वो इतने निहत्ते हैं, और वो कोई नई बात नहीं. आपने तो राजीव गांधी जी को भी सुना था, बोलते थे मैं क्या करूं, मैं 100 रुपए भेजता हूं, 15 रुपए गरीब तक पहुंचता है, बाकी तो दलाल बिचौलिए हमारे भ्रष्टाचारी कांग्रेस वाले खा जाते हैं. I'm adding the Congress wale as I'm assuming that they were absolute majority. They had 400 plus MPs. Yeah. They ran almost all the states. So it must have been their own people who were the corrupt people. Fact of life is, for us, we fight an election to serve the people. For us, we fight an election because we want to deliver on all the good things that we believe they deserve. For us, a manifesto is something we want to implement, and we monitor the implementation of manifesto at each ministerial level, at each level from top to bottom. For these parties, they are struggling with their survival. I was looking at the Rajasthan manifesto of Ashok Gehlot 4.5 years ago. He's not done any of what he had promised. Now, towards the end of the period, he's realizing he's on a sticky wicket, trying to give a sop or two to the people. That also he's not implementing. He's doing registration. इसको वहाँ बोलते हैं पंजीकरण कर रहे हैं. Ujjwala beneficiaries list is all defined, well known. We have been sending subsidy to them when they deserved it. Now he wants to give it, it's welcome. We have no complaints. I wish he would give more. But I wish he would have started 3 months back when he promised. What is this panjikaran and registration going on? Just a fobbing off tactic. Delay it, wants to give it just close to the election, and then forget about it, knowing full well that he's going to lose that election. They don't care about fiscal prudence. They don't care that what we need to do is empower our people. They are capable, they are talented, and they can do very well in their life. What they need is opportunity. They don't want to be made Doles. They don't want to be made so weak that they can't stand up for their own. What Prime Minister is doing is wants every individual to stand up and be a part of this great growth story of the next 25 years. I've seen you campaigning for other people. Several people I've seen. You go on the ground, you pump fists, you cuddle babies, and you do all that. I've seen you doing that, speaking with the youth. When are you going to stand for election? Why not Lok Sabha? Well, we are all party workers. And the party chooses who does what. I have certain responsibilities which I am fulfilling. I still have 5 years to go on the Rajya Sabha term. But therefore, I don't see any immediate logic in that question. The party, of course, is supreme in our system. The party leadership decides what each one's role is. And for the present, they've given me a particular role. Okay, finally, I want to ask you this one question, which, I've seen young people coming and asking you whether they should join politics, whether they should be in public service, and how, while they're holding a job, they can contribute towards building the nation. Would you, since you spent so many years in politics, would you encourage people to join politics? I would not only encourage them, I would appeal to them
And I would be very grateful if you spread this word that there is a lot of goodness, inane amount of goodness in each one of us. The 140 crore Indians are good people per se. We just need to ignite that spark and get them involved in giving back to society in every small way. I mean, look at a small gesture like the Padma Awards. How Prime Minister Modi has been able to convert that into a medium to recognize the hidden talent and hidden good work that is happening in India so that we can encourage more people to go down that path. A person of limited means running a cycle ambulance in the interiors of India in smaller towns or villages, he deserves a Padma Award. I had the fortune to meet 10 or 11 Padma awardees yesterday in Jaipur. Each one of them was a nugget. I met a tribal lady coming from the nomadic tribes, coming from a family of nomads, Gulabo ji. She recounted her whole story to the extent, for historical and traditional unfortunate reasons, the society around her, the panchayat or the whole tribe, was not encouraging girl children. And she herself had been buried into the ground while she was alive. And 5 hours later, her mother and mother's sister, chupke, in the darkness of night, they went and they just gone to see the child's face once. But when they dug her up, they found she had some pulse and some heartbeat. Alive. And they saved her. Then the village ostracized the family, threw the father out, but the father was Why? so committed. For saving the child? For saving the child for traditional historical reasons. That is all what the Congress never tried to address, which Prime Minister Modi is trying to address. All these unfortunate past traditions which need to be done away with. We need to be more progressive in terms of social reform also. And she was then brought up by her parents. Today, she has a huge social media presence. Today, she's recognized, she's an internationally acclaimed dancer. They used to have a dance form where they used to play and the snake used to dance. Sapera, So she has Talbelia or something. Sapera. So she has made Sapera as a dance form Okay. on which she dances, and she's become well known worldwide. Okay. She has a school where she teaches others this new dance form. Okay. She's helping girl children get educated. She's educated her own child and made her a very responsible citizen, and now a global citizen. And she got a Padma Award. I asked her, did you apply for it? She said, no, I got a shock of my life and I got the call. And most people there whom I met, there was 2 gentlemen who are from the music world, Hussein, 2 persons from the minority community. Somebody else commented when I was felicitating them that, they should have been recognized with this 25 years ago. So, but they said, अरे छोड़ दो उस बात को, पुरानी बातों को. हमें आज आनंद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारी कला को recognize किया. दे रहा है दुरुस्त है. So I think these are small messages, Right. but they have a big transformational impact on society. And therefore, I think I would appeal through you that our young generation, our middle class, our well-to-do young boys and girls, our educated young boys and girls must make it a point to, in whatever field they choose, all need not be in politics. They are welcome in politics. Yeah. More the merrier. Good people are wanted in politics. But whatever is their calling in life, whatever they choose, they must give back. I have appealed, for example, to all the graduates of National Institute of Fashion Technology or National Institute of Design. Can you give me 1 day in a month or 1 day in a week? Whatever you can. Do a online training program. With your experience coupled with the education you received in NIFT, you've now become and many of them are all over the world. You've now become a far more grounded or experienced person. Can you give some time to the next generation? I want to introduce more courses online so that instead of maybe 10,000 graduates that we are able to enroll or 6,000-7,000
in NID, NIFT, Indian Institute of Packaging, Indian Institute of Foreign Trade, all of them put together. We are trying to see if we can expand the skill sets of people in I was a just bigger going to way, say that, skilling our population. using technology. So it's going to be a collective effort. And I do hope we'll see more IIT engineers, more IIM graduates, more chartered accountants, more architects, more interior designers, giving back to society. It could be skill development. It could be helping government make a better building. It could be seeing whatever public works are going on and that they are good quality, so that ultimately it's taxpayer money that's being used. So, Good things will come when good people get involved. final question is on which I've asked many people, and I'm going to ask you also, that people who pull in long hours, who work in high-stress jobs, and you travel too, what do you do to keep, your mental health, your mental well-being? What do you use? What tactics? What are your tools that you use? Well, I'm very religious, and prayers and meditation do give me a lot of solace and help me remain calm to the extent I can. I'm told I'm a little bit aggressive sometimes. Okay. I do my treadmill regularly or do a walk. I do yoga every day, and if I'm traveling, I do it with my Acharya ji online. So we have a very good routine, and I do that whatever be the time of the day or night. So physical and mental well-being, is it discussed among the cabinet, among you all? When you all get together, do you all talk about what tools you should use? We don't discuss so much between each other, but Prime Minister Modi is always concerned about us. He has a very sharp eye. I mean, I can share an instance, for example, where a colleague of ours, none of us felt he was unwell, but Prime Minister Modi in a break time of a council of ministers told him, कौशल किशोर जी, मुझे लगता है आपको डॉक्टर को दिखाना होगा, कुछ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, आपका वजन सडनली बढ़ गया. And lo and behold, when he went to the doctor to check up, he was detected with some serious illness for which he got treated, and now he's perfectly fine. I met him a few days back, and he was actually much more agile and active. Yeah. So Prime Minister is always concerned about us. My throat used to always be a problem. I've shared this before. During COVID, when I was debriefing him on certain issues, he suddenly turns around and tells me, and must have been very hoarse that day. He says, "Tumhe apna gala theek karna hai?" And I said, "Of course." He said, "Karoge jo main kahunga?" And I said, "Jo kahoge karenge." And he says, "Yog karo." And I used to do yoga when I was much younger, and I'd kind of come to Delhi and time nahi milta tha, chhod diya tha. So he inspired me to get back into it. And not only inspired me, he made sure that a teacher comes and gets me going. Okay. So that's that human touch that Prime Minister Modi has, which many people outside don't get to see or understand. But really a person with a big heart, very concerned about all his colleagues, all the party workers, people with whom he's worked for 30, 40, 50 years. I remember during COVID, दूर दराका का किसी ने 30 साल पहले मोदी जी के साथ काम किया होगा, अगर इनको पता चलता उसको कोविड हो गया है या तकलीफ है, बीमार है, would make it a point to call him up, find out about his well-being. Somebody has a good occasion in their family, somebody has an unfortunate problem in the family, you'll find the Prime Minister making a call. Okay. He really inspires you with his actions. Right. And has that human touch, that family touch, that he earns not only your admiration, not only your respect, but your love. Well, on that note, thank you very much, Piyush, for sparing the time, speaking to us in such great detail about personal anecdotes as well as your job, which you have. In spite of all the pressures, you found the time. So here's wishing you mental and physical well-being and all the best for the future. Thank you very much. Thank you. Thank Delighted you so to be on your show. Thanks. Thank you. Thank you. Thank you for listening or watching this episode. Do like or subscribe on whichever channel you have seen this or heard this. Namaste. Jai Hind. Click here to watch the previous episodes.
I fundamentally believe for every political party, its time has to come. 10 years of Modi ji, if you are not able to bring BJP in Tamil Nadu, how will you bring? BJP is expanding now. We are in the expanding phase. We are having a booth president. We are going to all parts of Tamil Nadu. We have lost a sitting general secretary of the party who was hacked to death outside his home by Islamic fundamentalist. Till now, we have lost more than 100 Karyakartas. So from the outside perspective, for people who say Tamil Nadu is a very safe state, Tamil Nadu is a state where terror exists. What the way DMK is trying to do it, they will try to make it, again, they will try to play the Delhi versus Tamil card. That is the only card left in their armory. They don't have any other thing. For them, they've created an impression of Delhi as if in Delhi some 4 or 5 robbers are sitting inside a room and they want to loot each state and take money into it. You put a shoe and a t-shirt and a jeans pant, you walk, people call that as Padayatra. I think Padayatra is not that. Padayatra should have a larger purpose, madam. It is not you are angry with Modi ji, you want to do it. You are angry with this, you want to do it. Lot of media, especially from Delhi, is focusing on the governor's speech. But we have to understand what happened before the governor's speech. The governor was made to feel unwelcome. They spoke ill of governor in the well of the house. They say the governor has added some lines to it and given his own speech. He did not add a single line of his own. This watch is something which I wanted to wear because the watch is of the Rafael cockpit. A party in power is asking a common man show the bill, which of course I am showing April, the day I start my Padayatra. I try to push some things very fast. I am not like a traditional politician who will allow things to mature. I want to put more firewood and cook faster. But right or wrong, that is my style, madam. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of ANI Podcast with Smita Prakash. Today my guest is Annamalai Kuppuswamy, the state president of the BJP in the southern Indian state of Tamil Nadu. Annamalai hails from the Karur district in Kongu region of Tamil Nadu. He's an engineer, holds a master's degree in business administration from the Indian Institute of Management and then became a police officer in 2011. Not content with a successful 8-year stint in the Indian Police Service, Annamalai joined the BJP in 2020 and within a year he was appointed the president of the state unit. Annamalai ji, you are emerging as one of the sharpest young politicians in the country. Whenever somebody talks about young politicians who are going to matter by 2024, your name is taken in that. In the south, the BJP has not really managed to make much inroads over the past several decades since its existence. You are seen as this white ray of hope by your party in Tamil Nadu. So what is it that is your brief and what are you expected to deliver in Tamil Nadu? Thank you so much, madam, for having me in your podcast show. I fundamentally believe for every political party, its time has to come. Whatever we push and pull, certain conducive factors has to be there for a political party to emerge. If you look at Tamil Nadu, for a long time we had big stalwarts there. People like Jayalalitha madam, people like Karunanidhi Ayya. They're like very, very people bigger than their shoes. People who can pull crowds. People just thought they can't do any wrong. That is the kind of confidence they generated over the last 40, 50 years. Correct. Very importantly, Dr. MGR. Now, what has happened in the last 4 or 5 years, we see a lot of vacuum in Tamil Nadu. Though a lot of parties are fighting for that space. And they need a larger-than-life leader kind of. Tamil Nadu people are always used to this kind of an impression. You need a larger-than-life leader. So now our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji exactly fits into that role. 9 years into governance. All the central government schemes are reaching that maturity level. People are seeing in their own eyes the transformation. Tamil people generally, it takes a little bit time for them to get warmed up. If you look at Dr. MGR himself, he acted in movies for a long time. He was in DMK for a long time. Then he started a party in 1972. 5 years later, he came to power. There is no that instant hero in Tamil Nadu. They take time to warm up to you. Once they warm up, then sky is the limit. For Modi ji, people have warmed up to him. They have accepted him. They have seen him for 2 different elections now. So 2024, we fundamentally believe Modi ji is going to fill that big vacuum in Tamil Nadu. That's how I see it. The brief is very clear, madam. To spread the party. The party has to go to all parts of Tamil Nadu, 39 Lok Sabha constituencies. We have to go around everywhere. The party is traditionally strong in some parts of Tamil Nadu. We are strong in Kanyakumari, where we have produced MPs. Nilagiri we have given MPs. Coimbatore we have given MPs. Trichy we have given MPs. So now we have to spread out tier 2 cities to the village level. That is the work we are doing as of now. See, for our viewers and our listeners who may not be very familiar with Tamil Nadu politics,
this, like when you said about this larger than life, many of the people that you mentioned, they came in from the glamour world. They came in from film industry, or Karunanidhi was not exactly from film industry, but he was a poet, and he had this interaction with the crowd and all that. And everything that we see about Tamil Nadu politics is huge posters, and then people